matches there. Oh, that was excellently done from Toshniwal. Again, fighting her way through. 13-14. Yes, she's playing catch-up, but then she's able to deliver under pressure against Asmita. In this women's singles semi-final. Unforced error there. Yeah, straight away Asmita into it. Apology. 15-30. 15-13, Asmita leading. फिर से नेट पर जा टकराई शटल। 16-13 से आगे चल रही हैं अश्मिता, और शायद ये दर्शकों की कमी हो या फिर वो ऊर्जा देखने को नहीं मिल रही है जो कि अक्सर देखने को मिलता है, खास तौर से अगर दो भारतीय खिलाड़ी, दो युवा भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हो कोर्ट पर। तो भारत में इन मुकाबलों का आयोजन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच ज़रूर है, लेकिन वो ऊर्जा देखने को नहीं मिल रही है। उसका वजह शायद यही है कि दर्शकों की कमी। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना वायरस की ये महामारी को देखते हुए, ये वैश्विक महामारी है जिस वजह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कदम उठाए गए हैं, और इन मुकाबलों का आनंद आप टीवी सेट पर लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है ओडिशा की, हम देखे हैं यहाँ पर दर्शकों के बीच में खासा उत्साह रहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वो हॉकी के मैचेस हों, वो एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स हो, दर्शक खचाखच भरे होते हैं। और जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के काफ़ी नज़दीक है बाराबटी स्टेडियम, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस देखने को मिलते हैं, और हमेशा से ही ये नॉर्म रही है, जब भी उड़ीसा में बड़े मुकाबले आयोजित होते हैं वहां आपको दर्शकों से खचाखच भरे हुए स्टैंड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर 18-13 से आगे चल रही है अश्मिता, और गलती। कुछ समय तक अच्छे अंक अर्जित कर रही थी, लेकिन यहाँ पर नेट पर मार बैठी। ये रिएक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं, जिस वजह से स्मित तोष्णीवाल को एक अंक मिला है। ये जो बढ़त है अब वो घटकर हो चुकी है 4 अंकों की। पहले गेम में अश्मिता 18-14 से आगे जरूर चल रही है। यहाँ पर स्मित तोष्णीवाल की सर्विस, गलती स्मित तोष्णीवाल की। वहाँ चालाकी करने की कोशिश कर रही थी, नेट के ठीक ऊपर से शटल को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गलती नेट पर मार बैठी, जिस वजह से एक और अंक मिला है। और अब इस गेम में वापसी करना लगभग काफ़ी कठिन हो चुका है स्मित तोष्णीवाल के लिए। बढ़िया बैकहैंडर, लेकिन उसके बाद बेहतरीन क्रॉस कोर्ट स्मैश यहाँ पर स्मित तोष्णीवाल की। देख सकते हैं आप एक बार फिर से, जी हाँ, ठीक समय पर अपना रैकेट के एंगल को बदला और एक पॉइंट यहाँ पर अपने नाम किया है स्मित तोष्णीवाल ने। क्या वापसी कर पाएंगे? क्या ये समय है वापसी का? अभी भी 2 अंक चाहिए इस गेम को अपने नाम में करने के लिए अश्मिता को। गलती, एक और अंक। 16, जी हाँ, लगातार 2 अंक स्मिथ के पक्ष में। चालाकी के साथ शटल को प्लेस करना चाहती जरूर थी वहां पर अश्मिता, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई। 19-16 की बढ़त उनके पक्ष में। स्मिथ तोष्णीवाल की सर्विस, और फिर से नेट पर एक और अंक, लगातार 3 अंक। 19। सो वापसी की घंटी बज चुकी है यहां पर स्मिथ के पक्ष में। 17 पर पहुंच गई है। ये जो फासला है वो सिर्फ 2 अंकों की है इस समय। फिर से एक अनफोर्स्ड एरर, फिर से बाहर मार बैठी।
बेहतरीन तरीके से इस मुकाबले में स्मिथ तोष्णीवाल ने वापसी की है। बराबरी तक अगर पहुंचते हैं उसके बाद अश्मिता के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। कोर्ट कवरेज हालांकि बढ़िया था, लेकिन गलती फिर से बाहर गई। लगातार ये 5वां अंक और 19-19 की बराबरी पर पहुंच गया है ये पहला गेम। It has been an amazing comeback from Smith Toshniwal. 5 straight points. The steely eyes there. Picture of concentration. Just get a feeling that she thinks that she believes and belongs to the stage. And against a superior competitor. Ah, what a comeback again from Smith. 20. Another point. Game point. Now she's looking 19. to win this game. 2019. Just 1 point away. A lot will be riding on Smith's mind. Ah, Game. well done. Fantastic from Smith First game, Toshniwal, 1-1. and Smith she's Toshniwal. able to win this game 21-19. by the barest of margins. 21-19. Well done. Excellent composer. Smith win this game 21-19. Seconds. 20 seconds. Yes, ongoing is the semi-final match between Smith Tosniwala and Smith Chalia, and the second game is to unroll at any time from now, and this is the semi-final, the women's category, number 2 in Odisha Open 2022. This is the first edition of Odisha Open 2022. Ready? Second game. Love all. Play. Smith Tosniwal. Service over. And this time
Asmita Chaliha. Love. Asmita Chaliha. She will have every reason to Unquote. pocket this game to prove her mettle. And both Smith Tosniwal and Asmita Chaliha, quite promising players of India. And Asmita Chaliha had beaten I Jaiswal, Service over. the USA, in 2-1 in the quarterfinal One. to reach up to this All. level. Similarly, Smith Tosniwal had correction. Smith Tosniwal had beaten I Jaiswal of USA in 2-1 Two. in the quarterfinal to reach One. up to this level. And similarly, Asmita Chaliha had also been coached very effectively by Pullela Gopichan. This is the Service second over. game going on in the Two. semi-final, All. number 2 in the women's singles. In the semi-final, semi-final number 2 in the women's singles. 3-2. Smith Tosniwal versus Asima Chaliha. Asima Chaliha, the girl from Guwahati. She had been the gold medalist in the South Asian Games way back in 2019. 4-2. Asmita Chaliha on a lead, serving it 4-2. One more point for Asmita Chaliha. 5-2. Asmita Chaliha, 5-2. Giving a love and coming up with a smash, but playing to all the corners of the court. 3-5. Smith Tosniwal. The ranking number is 265. Service over. 6-3. Asmita Chaliha once again. Playing with all wide angles. Both the players, they don't seem to be 3. aggressive in this match. So one more point for 3. Asmit Chaliha. Quite an experienced player. If we look at her age. Oh, playing it wide angle and cross court smash that she 9-3. tried. Clear? Return the shoot. Play on. Asmita Chaliha at 9-3, clearly an edge over Smith Tosniwal. Oh, that Service was over. not to be, and she had to concede the point. But 4, one has to admit 9. the way she moves her wrist, her footwork and wrist work, they have been tremendous so far, and they are the fits to be watched. At 4-9, Smith. 5-4.
9. If this is the way Smith moves up, then Asmita will have to give a tough fight, definitely. The beautiful backhand shot that we saw. Six. 9. As he failed to reach for the shuttle, otherwise it would have been a different story. Smith Tosniwal. Seven. 9. At 7-9, it's Smith Tosniwal serving. Another point for Smith Tosniwal, but what a 9. comeback it has been from Ashmita. When we talk about sport, it's all about mindset, and Ashmita is showing her true colors right now, leading 9-8, but again, 2 straight points for Smith. She's also crawling her way back through. She has won the first game. She's a fierce competitor. She's got some tremendous shots. Service over. She gave it away there. Had a chance, but then Ashmita, 8. quite agile, and that stretch didn't walk through for Smith Tosniwal. पर बहुत अच्छा मैच ये हम लोग को देखने को मिल रहा है टीडी स्पोर्ट्स में. Again, wide. 11-8. 11-8. What a comeback it has been from Asmita. She was down and out in the first set. And the second set, she has just changed her mindset and her technique a bit. And she's been able to adjust and accommodate to the pressure of the semi-final. 11-8, she's leading. She's on the charge, and it's time for Smith Tosniwal. A lot of instructions been given by the coach. Maybe talking about the drift and the spin. And some muted chats as well from Asmita and her coach. Mid-interval. This is going to be a hell of a contest. 20 seconds. First game won by 20 Smith seconds. Tosniwal in the semi-final. And Asmita showing her true colors. This is the second semi-final in the women's singles category being played between Smith Tosniwal and Asmita Chaliha. Smith Tosniwal has already pocketed the first game, and Asmita Chaliha has to fight it out to make it an equalizer. But let's see what happens this time. Asmita Chaliha, the girl from Guwahati, in the state of Assam, and Assam has a long tradition of producing the very good badminton players for India, and particularly the northeastern part of India has been producing the best of sports persons, and it has a wonderful track record comparison to the other parts of India. And this is the second semi-final in the women's singles category
and Chaliha wants a little bit of treatment from the present physician, because to mend the bruises, one needs a little bit of attention from the physician, because sometimes the bruises, they play havoc on the performance of the players. That is Asmita Chaliha. At 11-8, she would be serving Smith Tosniwal. At this point of the game, in the second game of the second semi-final in the women's singles category. 11-8. Play. That was not to be. Service over. Smith Tosniwal this time 11. with 9-11. Both the players, they don't seem to be in a hurry to gain the points. Rather, they give more importance to the rally. And the result is we are able to follow a good rally here. Service over. That is Asmita Chaliha this time. 12. Turn for her serve at 9. 12-9. And when all the matches are being played sans spectators, it has a different type of psychological impact on the players. Thirteen. 9. 13-9. Asmita Chaliha. Fourteen. 9. Asmita Chaliha. It looked as if Smith Tosniwal didn't take any trouble. Rather, he was gifting away a point to her. And if this is the way she moves up, then there will be this game is going to be the equalizer. And we'll have to wait for the third game to be the deciding game. Chaliha this time. Service over. It's 11-13 now this 10, time. Tosniwal to serve. 15. The momentum of the game has slowed down definitely since this smash attempt on the part of Chaliha. Service over. A wrong footwork on the part of 16. Smith 10. Tosniwal, for which he was not able to lift the shuttle and put it across the net. As sometimes the reflexes, along with the physical reach also, to play important, deciding thing in a game here. 17. 10. Chaliha at 17. No, there was no return of this mass, but that was 18. 10. 18-10 this time. Just giving away one more point to the booty of Chaliha. It's a wrong 19, calculation 10. on the part of Smith Tosniwal.
It's 20. 20 Game point 10. 10. And as it appears now, Chaliha would be able to pocket this game. Game. Oh, that is the way. We Second come game to won the by end of the second Asmita game, Chaliha. and the 21, third game 10. is going to One be game the on. deciding game to find the winner in the second semi-final of the women's singles category. And if I make a small analysis about the second game, we can find that not much of aggression was there on both the players, and they were seen as if they were making a practice for the third deciding game. So let's see what happens, and we expect more of action because they had been saving their energy, they're saving their skill, and they are saving their calculations also for the third game. So this is how both the players, they pitted against each other. Smith Tosniwal and Smith Chaliha, taking the final moment tips from the coach. And particularly, this is the way the coaches, they exude the important points, and while boosting up the confidence level, energy level of the players. This is going to be the wonderful game now, because both the players, they have already pocketed one each of the games 20 there. seconds. And this is 20 the seconds. interesting semi-final number 2 that is being played between Asmita Chaliha and Smith Tosniwal. Final game. Love all. Play. One. Smith Chaliha Love. pockets the first point in the third game. We'll have to work very, very hard to pocket the game, ultimately to pocket the match. Two. Love. It was a wonderful killing shot. Just pressing little beyond the net and Three. pocketing one more point. Love. So this is the way slowly and steadily Chaliha is moving, and she's pitted against Smith Tosniwal at the moment at 3-0 in the third game, the deciding game rather. Superb footwork, just turning about, she was able to make a beautiful return. Four. The footwork and the Love. wrist work, they both are important Change the shuttle. in a game of badminton. Once Five. again, 4 points, Love. 5 points at a consecutive row. This is not a small feat by any standard on the part of Asmit Chaliha. Service over. Oh, there is the break. And now Smith Tosniwal has to Five. stop the movement of Chaliha.
Smith Tosniwal seems to be very cool on the hills. Two, 5. Mental alertness and confidence, they both are very, very important here. Smith Tosniwal. Superb return. It was a good rally, but Service the- over. Tosniwal had 6. to concede the point. 2. But whatever she did, she was able to make Chaliha run from this side to that side, from left to right, from front to back also. Because that is the way one has to exploit the energy and skill of the opponent. And that exactly happened. Smith, back and forth. This is the third game that is going on in the second semi-final category in the women's. In the first Odisha Open 2022 being played here at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack Leon. in Odisha. Service over. Both the players, they seem to be not exerting too much of pressure on their opponents, 3, but still then 6. they both are displaying good amount of skill and gamemanship here. And if I reason it out, it could be 4, because of the psychological pressure that they are feeling. They are not feeling very, very comfortable with the surroundings here because they are playing with empty stands. And particularly when somebody plays to the packed stands, that adds to a different Service level over. of energy and confidence, which all the players that we have been 7, watching. This is the 4. third game of the day, third match of the day rather. And we have been seeing all of them, they are slower and slower possibly because of the lack of the spectators here. Because nothing can be done about it because the entire tourney is Service over. following the COVID guidelines, the protocols, 5, 7. and this is the way they pitted against each other. 5-7, Tosniwal. Tosniwal serving Chaliha at 5-7. 6. Not very quick on the 7. hills. That body language doesn't have that aggression. But still then, they seem to be enjoying playing each other. Seven. All. This is in slow action. And this is the way she had to concede the point. Chiranjeev. जी हाँ, और उस वजह से अब साथ साथ की बराबरी पर पहुंच चुका है ये तीसरा और निर्णायक गेम। लेकिन वहां पर क्या ज़बरदस्त Service over. स्मैश अश्मिता की, और एक और 8, पॉइंट उनके पक्ष में। 7. अभी तक इस गेम में अश्मिता काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद स्मिथ तोष्नीवाल ने लगातार अंक अर्जित करने के बाद बराबरी तक पहुंचे ज़रूर थे, लेकिन इस समय अंक अश्मिता को मिली है। 8-7 से आगे चल रहे हैं। हम लोग कुछ देर पहले अश्मिता के बारे में बात तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन अगर स्मिथ तोष्नीवाल के बारे में बात करें तो उन्होंने इशिका जायसवाल को उन्होंने हराया था इसके पहले क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले में। वहीं दूसरे राउंड में उन्होंने अनन्या प्रवीण को हराया था, और अपने पहले मुकाबले में स्मिथ तोष्नीवाल ने नेहा पंडित को हराया था इस प्रतियोगिता में। तो पहले राउंड से अभी तक का सफ़र काफ़ी शानदार रहा है, और इस मुकाबले में, ये सेमीफाइनल मुकाबले में, ये जो तीसरा गेम है, तीसरा और निर्णायक गेम जो चल रहा है, वहाँ पर स्मिथ तोष्नीवाल 2 अंकों से पिछड़ ज़रूर रही है, लेकिन जहाँ तक अभी तक का खेल और अभी तक के प्रदर्शन के ऊपर नज़र डालें तो उन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ पर अनफोर्स्ड एरर, एक गलती अश्मिता की, जिस वजह से
पॉइंट स्मिथ तोष्णीवाल को मिला है। यह है ओडिशा ओपन 2022 का महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबला। ये दूसरा सेमीफाइनल आप लोगों के सामने इस समय चल रहा है, जहां पर भारत के ही दो युवा प्रतिभाएं एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं। बेहतरीन रैली खींचती हुई यहाँ पर बहुत बढ़िया प्लेसमेंट देखी, वो स्लिप कर गई थी आश्मिता, जिस वजह से स्मिथ तोष्णीवाल ने बस शटल को हल्के हाथों से प्लेस किया और एक अंक बटोरने में कामयाब रही और फिर से 9-9 की बराबरी पर पहुंच चुका है ये गेम। और शायद चोटिल नजर आ रही है इस समय आश्मिता चालिहा। For the last point that they played, they had a little bit of aggression, and Asmita Chaliha, she had to trip there, and she was not able to lift that smash that came from Smith Tosniwal. Believe she is feeling a little bit uncomfort, but that will not be too much on her part to come back to take on to the action. But so far, this is the third game in the second semi-final in the category of women's singles. And both of them, they have won one game each, and this is going to be the deciding game, so that the winner of this game or winner of this third deciding game will move on to the finals. This is how she had the trip there. And the reason could be the wrong footwork. Not entirely, it could be reason out that the flooring was playing the Travant there, but still then the footwork was there. And on the part of Tosniwal, Smith Tosniwal, she is all the time confident. She is very cool. She takes it all as if she is practicing with her compatriot. That is the way, and that helps her to stay cool on the court. And Asmit Chaliha, she was little anxious to gain more points, and in her anxiousness, she was able to make certain forced errors also. But we hope that she would be able to make a comeback this time with greater amount of action. And this is the first edition of Odisha Open 2022 badminton. Here it's being played at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack in the state of Odisha. Do you have the paper tape? Obviously, she is feeling, Chaliha is feeling a little bit of uncomfort. That is why the attending doctor Is it paper? is taking all possible care so that the player moves back to the field with all agility and interest. That's it. Chaliha is back in action now against Smith Tosniwal for the third game in the second semi-final in the women's category. 9-all. To serve, Like ready is Tosniwal. ten, 9. Smith Tosniwal again pocketing 1 point, looking very confident. But what I can look from the commentator's box is that 11-9. Smith Interval. Tosniwal Change is ends. forcing Chaliha to move the entire court. So that is the way she is trying her best to put a psychological pressure.
this is the match between Chaliha and Tosniwal. And if we look at the score, both of them, 20 seconds. they're 20 standing seconds. against each other at the equal level. Maybe they have to change their calculations. Maybe they will have to change their maneuvers to prove their mettle Black also. and court. चलिए, return the shuttle. So at this point, with the change of the sides, that is Chaliha, and here 11-9. is Black. Tosniwal is to serve at 11-9. 11-9. At 11-9. No, it's a wide shot. Serving point. Tosniwal. You turn the Tos this time is serving 10, Chaliha. 12. Chaliha at 10-12. Falling back on the part of Tosniwal 11, is tremendous. Her footwork has 12. been tremendous, and she definitely has an advantage on the matters of footwork and the D's to work in comparison to Chaliha. Chiranjeev, if I make a comparison of both the players, I can understand that Chaliha is playing a power game because she is exerting the power to her shots, Service over. while Tosniwal 13, is adding calculation 11. to her shots. And that is why things are becoming different for each other. And Tosniwal seems to be very cool, very comfortable. And Chaliha sometimes feel that discomfort, and the discomfort is obviously exerted by Tosniwal. जी हाँ, काफ़ी ताकत झोंकने का प्रयास कर रही है अश्मिता चालिहा अपने शॉट्स में। यहाँ पर गलती स्मिथ तोष्नीवाल की Service एक over. अनफोर्स्ड एरर जिस वजह से 12, पॉइंट अश्मिता चालिहा को मिली 13. है। और जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले सरोज जी, दोनों खिलाड़ियों का गेम अलग अलग है और दोनों यहाँ पर अपने प्रतिभा के हिसाब से प्रदर्शन कर रही हैं। आश्मिता ज़्यादा ताकत झोंकने की कोशिश कर रही हैं, वहीं स्मिथ तोष्नीवाल कूल एंड काम कस्टमर हैं, वो धैर्य के साथ खेल रहे हैं और ज़्यादा मौका नहीं दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को। इस समय आश्मिता के पक्ष में सर्विस, तीसरा और निर्णायक गेम है, याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। और ये तीसरे गेम में दोनों के बीच जो मुकाबला है काफ़ी तगड़ा हो रहा है। गलती एक बार फिर से तोष्नीवाल की, लगातार दो 13 अनफोर्स्ड एरर, फिर से गलती और जिस वजह से आश्मिता चालिहा को एक और अंक मिल गया है और यहाँ पर 13-13 की बराबरी पर पहुँच गया है स्कोर लाइन। पहले गेम को 21-19 से जीतने के बाद दूसरी गेम में बेहतरीन वापसी देखने को मिली आश्मिता चालिहा की, जिस वजह से ये तीसरा और निर्णायक गेम काफ़ी रोमांचक रहा है अभी तक। प्लेसमेंट अच्छी नहीं, प्लेस करने का मौका ज़रूर था 14, लेकिन गवाई यहाँ पर 13. स्मिथ तोष्नीवाल ने, जिस वजह से बढ़त अब आश्मिता के पक्ष में। जिस तरह से पेंडुलम स्विंग होता है उस तरह से इस मुकाबले में लीड जो है स्विंग हो रही है। कभी स्मिथ तोष्नीवाल आगे नज़र आ रही हैं, कभी आश्मिता चालिहा, और इस समय आश्मिता चालिहा एक अंक से आगे चल रही हैं और सर्व करती हुई आश्मिता। कोर्ट कवरेज काफ़ी बढ़िया है दोनों खिलाड़ियों की, वो काफ़ी रैलीज में देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर मौका मिल गया है Service over. बेहतरीन तरीके से स्मैश लगाते हुए 14, सर्विस को वापस अपने all. पक्ष में लाने में सफल और बराबरी का अंक भी अर्जित कर लिया है स्मिथ तोष्नीवाल ने। The smashing shot that came from Tosniwal this time, and Chaliha was clearly beaten in the mid-court and she was not able to lift it.
At 14 all, that came the service from Tosniwal. Service over. 15-14. Chaliha. No, it was clearly a wide shot. 16. That proper 14. movement, the follow through was not there on the part of Tosniwal. Service over. 15-16. Tosniwal once again is serving Chaliha. Once again a wide shot. Service over. 17-15. It looks as if both of them, they have decided to move up on equal footing. Great attack. Counter attack also. It's wide. Service over. Had it 16, fallen little shorter, then things would have been very 17. different and it would have been a different story altogether. At this juncture, in the third and deciding game between Chaliha and Tosniwal. Seventeen all. Leon. Eighteen. But the placing 17. didn't happen the way that Chaliha wanted it to happen. Oh, it had been the longest rally 19, so far of the day, but 17. things are very different. And on the part of Tosniwal, it's one more point to Habuti, and she moves up to 19. Leon. And if she is lucky enough to pocket 2 points, then the game and the match would be hers. Staying cool there, Tosniwal. Great agility she has. Reaching for the shuttle in the left side and the right side from the back line to the nets. But there is a slight mistake. Yeah. 20. Match point 17. Leon. It could be the game point and match point. Oh, that is the end of the game and is the end of the match. And here, the winner is Chaliha. And her coach seems to be very happy with the performance of his ward. You must first light up. So this is Match the won end by of the Smith Tosniwal. semi-final number 2. 21-19, 10-21 and 21-17.
And in the finals, it will be the clash of titans in the women category between the two Indian women. Tosniwal would be meeting Unnati. So it will be Unnati versus Tosniwal. Unnati Huda versus Smith Tosniwal in the women's singles final. So we hope to see more of action and more of adventurous shots, more of calculations, and more of beautiful gamemanship there. So this is the end of this second semi-final, and the final has been decided. And this is the flash of action in the first edition of Odisha Open 2022. जी हाँ, एक रोमांचक सेमीफाइनल देखने को मिला। एक रोमांचक सेमीफाइनल अभी समाप्त होता हुआ। चलिए अगला मुकाबला पुरुष सिंगल्स और स्मिथ तोष्णीवाल जीतने में सफल रहे 21-19, 10-21 और 21-17 से। ये देख सकते हैं आपके सामने वही मुकाबला आश्मिता चालिहा और स्मिथ तोष्णीवाल के बीच जो खेला गया था। दोनों भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए यहां पर फाइनल में जगह बना दिया है स्मिथ तोष्णीवाल ने। शोभन गणनायक है मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस समय। शोभन, शानदार प्रदर्शन, एक अच्छा सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिला था। स्मिथ तोष्णीवाल ने जीत हासिल की और वो खेलने जा रही हैं उन्नति हुड्डा के खिलाफ फाइनल में, जो कि कल खेला जाएगा। Excellent win from Smith Tosniwal and defeating an experienced campaigner like Asmita. You need a lot of grit and determination. And the next game that is going to happen now, it's a big one. It's Kosal Dharmamer versus Priyanshu Rajawat. Priyanshu is also quite an experienced campaigner when it comes to big matches, and he has also played in the PBL 2020. But he had a tough quarter-final where he was just able to pip and win his way through. A lot will be riding on those young shoulders, a wise head as well. Both the players will back themselves to win this. The toss is going to happen. The match referee there. जी हाँ, जैसे ही कौशल और प्रियांशु एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, शोभन ने अभी आपको बताया कि ये एक रोमांचक सेमीफाइनल हो सकता है। इससे पहले हम महिलाओं के सिंगल्स में एक रोमांचक सेमीफाइनल देख लिए थे, अब पुरुष सिंगल्स में एक रोमांचक सेमीफाइनल देखने को मिलेगा और दोनों भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए तैयार होते हुए, और आशा की जा रही है कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ये ओडिशा ओपन 2022, ये जो पहला संस्करण है ओडिशा ओपन का, इसमें जो पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल मुकाबला है काफ़ी रोमांचक होने वाला है। बात करते हैं कौशल धर्मवीर के बारे में। उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में अभ्यंग सिंह को हराया था और वो मुकाबला भी काफ़ी शानदार रहा था। उससे पहले कौशल धर्मवीर ने के मिलेका को हराया था। उससे पहले उन्होंने गुरु साई दत्त को हराने में सफल हुए थे दूसरे राउंड में। तो कुल मिलाकर प्रदर्शन उनका काफ़ी बढ़िया रहा है और जिस तरह से उनका सफ़र रहा है सेमीफाइनल्स तक का, वो काफ़ी बढ़िया रहा है। प्रियांशु राजावत, उन्होंने मिथुन मंजुनाथ को हराया था अपने क्वार्टर्स फाइनल मुकाबले में। वो जैसा कि कहा जाए 40 मिनट तक चला था, उससे आकलन की जा सकती है कि कितना अच्छा मुकाबला वहाँ पर हुआ था। उससे पहले प्रियांशु ने
करुणाकरण को हराया था। तो जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं, जितने भी युवा भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि उभरते हुए खिलाड़ी हैं बैडमिंटन में भारत में, उनके बीच एक अच्छा संघर्ष, अच्छी प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। और वुमेन्स सिंगल्स के बाद, महिलाओं के सिंगल्स के बाद अब समय है पुरुष सिंगल्स का, और यह है पुरुष सिंगल्स का पहला सेमीफाइनल जहां शिरकत कर रहे हैं भारत के कौशल धर्मवीर और उनके सामने प्रियांशु रजावत। Has been quite a challenging year for Priyanshu. His first tournament was India Open and he was out in round of 32, was defeated by Lucas. And then in the Syed Modi International Tournament, he was out in round of 16. He was defeated by HS Pranay, 21-11, 16-21 and 21-18. And here he is now. He defeated Mithun Manjunath. As my co-commentator was mentioning, that game went to 40 minutes, 13-21, 21-14, 21-8. So yes, quite a tough year for him. We'll be looking for glory, just one step away. If he wins this, he will be going to play the finals of Odisha Open 2022 Super 100. Nervous energy all around this tournament being played on my right, the closed doors. Damama, India. So that vibe is very different. When you have fans, you get the motivation and the cheers, and you are Priyanshu able Rajawat, India. to play accordingly. But then, Priyanshu an Rajawat empty to serve. stadium, it's Love the all. energy that you need to bring Play. within. Let's play. Oh, excellent start. The One first blood has love. been drawn by Rajawat and is looking in some form. प्रियांशु रजावत की अच्छी शुरुआत यहां पर, और आप देख सकते हैं अभी से ही पता चल रहा है कि ये मुकाबला कितना शानदार होने वाला है। दोनों का कोर्ट कवरेज काफी बढ़िया है, लेकिन यहां पर Two पहुंच love. नहीं पाए शटल तक। ये देख सकते हैं आप, जी हां, पहुंच नहीं पाए, और दूसरा अंक यहां पर प्रियांशु के पक्ष में। बहुत बाहर मार बैठे, गलती एक बार फिर से love. कौशल धर्मवीर की। एक और पॉइंट यहां पर, तीसरा अंक। शानदार शुरुआत प्रियांशु रजावत की, लगातार 3 अंक अर्जित करने में सफल हुए हैं। ये पहला गेम चल रहा है और पुरुष सिंगल्स का ये सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल का पहला गेम, प्रियांशु रजावत आगे। इस बार अंदर जजमेंट अच्छी सही नहीं सुबह। प्रियांशु की, और 1, सर्विस गवाया यहाँ 3. पर। अंक मिला है कौशल को, उनका ये पहला अंक है। Two, three. एक और अंक उनके पक्ष में। दूसरा पॉइंट, 3-2 का स्कोर लाइन इस समय। अच्छी सही प्लेसमेंट सुबह. प्रियांशु 4-2. अब फिर से सर्विस अपने पक्ष में करने में सफल हुए हैं। प्रियांशु की सर्विस, और नेट पर 5, टकराने के बाद शटल 2. अपने ही पाले में गिर गई, जिस वजह से प्रियांशु को एक और पॉइंट मिल गया है। इस समय 5-2 से आगे। काफी ज्यादा अनफोर्स्ड एरर्स देखने को मिल रहे हैं इस मुकाबले में। कौशल को सावधानी बरतनी पड़ेगी इस समय। और इस बार स्मैश बाहर जाती हुई। 6, अनफर्स्ट 2. एरर्स की छड़ी लगाते हुए कौशल धर्मवीर फिर से क्रॉस कोर्ट स्मैश करने की कोशिश, जो फ्लिक करते हैं कलाइयों की आखिरी मोमेंट में, उसमें गलती, जिस वजह से शटल की प्लेसमेंट सही नहीं हो पाई। यहाँ पर प्रियांशु की सुबह। अनफोर्स्ड एरर, 3, जिस वजह से 6. कौशल को अपना तीसरा अंक मिलता हुआ। Lovely tone shatter there from Rajawat. 6. He's leading. 3 points from Dharmir, and
4, on 6. the tram lines. Those are not active. Those are active when the doubles are in play. Service out called too high. Service over. fault 7, too high. 4. Good pickup. Again, wide, Service over 5, challenging those 7. tram lines, and excellent call there. So both the umpires, the senior judge Sampath Rao Suribabu from India, and the chair umpire Emmanuel Gabutsail from Botswana. Correction out. That is some shot there. Fierce. 6, 7. But again, outside. 6-7. Rajawat slightly frustrated, even though he's giving us a smile, but he's boiling inside. Good pickup. Excellent return. Faint touches. Oh! Final some Service over. respite for Rajawat. 8, He has been 6. trying that far too many, and he has got his reward. He's got a point. He's leading 8-6. प्रियांशु 8-6 से आगे चल रहे हैं इस समय। ये आज के दिन का चौथा मुकाबला है जो हम आपके लिए ले आए हैं कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से, और इसी बीच 9, एक और पॉइंट 6. प्रियांशु रजावत आगे बढ़ते हुए इस मुकाबले में। उनका प्रदर्शन शानदार अभी तक रहा है और इसी प्रदर्शन को आगे लेकर जाने की कोशिश में ज़रूर होंगे। वहीं दूसरी ओर कौशल धर्मवीर की ये कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमबैक कर सके। क्रॉस कोर्ट लेकिन बाहर मार बैठे। Service over 7, ट्रैम लाइन का जिक्र 9. कर रहे थे शोभन कुछ समय पहले। वो ट्रैम लाइन से बाहर गई है शटल, जिस वजह से पॉइंट मिला है कौशल को। फासले को घटाते हुए अब 2 अंकों का फासला इस समय। गलती, 8, ये रेयर गलती 9. है। इतना ज़्यादा गलती हम प्रियांशु से देखने को नहीं मिला है अभी तक इस मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर गलती कर बैठे प्रियांशु, जिस वजह से जो शटल है वो जाकर टकराई नेट से और पॉइंट मिला है कौशल को। और बाहर मार बैठे। अब ये 9 बराबरी का अंक। all. 9-9 पर बराबर स्कोर लाइन। बहुत बढ़िया। Service over 10, उनको मजबूर कर दिया 9. नेट पर खेलने के लिए, और नेट पर खेलते हुए जो ट्रैम लाइन के बहुत नज़दीक खेल रहे थे, जिस वजह से बाहर मार बैठे कौशल। अंक मिला है प्रियांशु को और इस पहले गेम में 10-9 से आगे चल रहे हैं। मिड गेम ब्रेक में अगर आप लीड करते हुए मिड गेम ब्रेक को जाते हैं तो आपके पास एक मानसिक बढ़त ज़रूर रहता है। आप मानसिक तौर पर आगे रहते हैं और बेहतरीन स्मैश के साथ मिड गेम ब्रेक 11-9 को 11-9 इजाफा। से गए हैं यहाँ पर प्रियांशु रजावत। बेहतरीन स्मैश देख सकते हैं आप एक बार फिर से। कोई मौका नहीं था वहाँ पर, प्रतीक्षा करते रह गए और पॉइंट मिल गया प्रियांशु को। 11-9 की मिड गेम ब्रेक। इस समय अपने कोच से, अपने प्रशिक्षक के साथ सलाम मशवरा करते हुए दोनों खिलाड़ी आपके सामने ये है प्रियांशु रजावत और उनके कोच। अभी तक इस मुकाबले में प्रियांशु का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा है। कहीं ना कहीं एक दो गलती को छोड़ के उन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। देखने वाली बात यह है कि इस गेम को आगे कैसे लेकर जाते हैं। ये पुरुष सिंगल्स का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है ओडिशा 20 ओपन 2022 में, 20 जो कि seconds. कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहला संस्करण ओडिशा ओपन का। BWF कैलेंडर में पहली बार ओडिशा शामिल हुआ है।
और भुवनेश्वर जो कि राजधानी है उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर 11-9 स्थित ये जवाहरलाल 3 नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक, यहाँ पर खेला जा रहा है सारे मुकाबले। और आज है पेनल्टीमेट दिन, कल अंतिम दिन होगा जहां पर फाइनल के मुकाबले देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सेमीफाइनल के मुकाबलों में प्रियांशु 12, राजावत अपनी 9 बढ़त को जारी रखते हुए बेहतरीन स्मैश के साथ एक बार फिर से 12 पर पहुंचे हैं प्रियांशु राजावत। प्रियांशु का कोर्ट कवरेज काफी शानदार रहा है, ये स्मैश भी अच्छी थी लेकिन रिटर्न उतनी बेहतरीन। मजबूर कर रहे हैं अपने विपक्षी खिलाड़ी को ज्यादा भागने के लिए प्रियांशु। और बहुत ही बेहतरीन स्मैश, इस बार क्रॉस कोर्ट 15, लगाने गए, 9 शानदार तरीके से अपने शटल को प्लेस किया। और देखिए बेहतरीन स्मैश प्रियांशु राजावत की, कोई मौका नहीं कौशल धर्मवीर के पास। और ये बढ़त अब 4 अंकों की हो गई है प्रियांशु के पक्ष में। बैकहैंड और फोरहैंड का बेहतरीन इस्तेमाल किए हैं अभी तक, लेकिन ये प्लेसमेंट कौशल धर्मवीर की अच्छी, क्या यहाँ Service पर over. वापसी कर पाएंगे? 10, देखने वाली बात यह है 15. क्योंकि लगातार अंक गंवाने के बाद कुछ समय पश्चात यहाँ पर कौशल धर्मवीर को एक अंक मिला है और वो 10 पर पहुंच गए हैं इस समय। सर्विस कौशल धर्मवीर के पक्ष में है और ये पहले गेम में जो 3 अंकों की बढ़त है, ये 3 अंकों का फासला है, उसे घटाने की कोशिश में रहेंगे कौशल। बहुत बढ़िया, 11-13 अंदर शटल गिरी, शायद ऐसा लगा एक मौके पर कि बाहर जा रही थी लेकिन अंदर गिरी और लगातार 2 अंक मिले हैं यहाँ पर कौशल को। फासला अब सिर्फ 2 अंकों का रह गया है। ऐसा लग रहा है कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक अनफोर्स्ड 12, एरर यहाँ पर जिस 13 के बदौलत तीसरा लगातार पॉइंट कौशल को 12-13 कह सकते हैं क्योंकि कौशल सर्व करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस समय। और एक और अनफोर्स्ड एरर और स्कोर लाइन 13-13 हो गया है। अच्छी वापसी कही जाएगी, अब आगे बढ़ गए हैं 14 अपने विपक्षी 13 खिलाड़ी से कौशल धर्मवीर। हालांकि अब भी कुछ पॉइंट्स हुए, लंबे रैलीज देखने को नहीं मिल रहे हैं लेकिन उससे ये नहीं आंका जाएगा कि यह हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट नहीं है। ये ज़रूर टूर्नामेंट के आखिरी पड़ाव तक हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हाई वोल्टेज मैचेस देखे जाएंगे। और प्रियांशु के लगातार Service over. गलती के बाद यहाँ पर 14 गलती धर्मवीर की, जिस वजह से पॉइंट प्रियांशु को मिला है और फिर से बराबरी पर पहुंच गया है ये गेम। ये गेम काफी रोमांचक रहा है अभी तक, 14-14 की बराबरी पर। महिलाओं के सिंगल्स में सेमीफाइनल मुकाबले काफी रोमांचक रहे थे और पुरुष सिंगल्स का ये पहला सेमीफाइनल भी काफी मजेदार नजर आती हुई। गलती प्रियांशु की, Service फिर over. से अपने कंट्रोल में नहीं, 15, नियंत्रण में नहीं, 14 बाहर गई शटल। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला, लेकिन इस कोर्ट में ये 4था मुकाबला जो कि भारत के 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जा रहा है, कौशल और प्रियांशु। मेजबान देश भारत और जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भारत का प्रतिनिधित्व रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। और उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है।
हालांकि कुछ बड़े नाम इससे बड़े नामों की गैर हाजिरी के कारण कहीं ना कहीं रोमांच थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन फिर भी जैसे भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं उससे रोमांच देखने को मिल रहा Service है। over. यहाँ पर गलती देख सकते हैं आप एक बार फिर से। All. पॉइंट प्रियांशु को मिला क्योंकि धर्मवीर ने बाहर मार बैठा वहां पर शटल को। Play. दोनों खिलाड़ी एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए शटल में परिवर्तन करते हुए, उन्हें भी पता है कि ये कितना हाई इंटेंसिटी मैच है और ख़ास तौर से जब दर्शकों की गैर हाजिरी रहती है तब इंटेंसिटी आपको अपना ताकत और ज़्यादा झोंकना पड़ता है अपने मुकाबलों में। शटल नेट Service पर over. लगा ज़रूर, लेकिन 16-15. वो शटल आकर प्रियांशु के पाले में गिरी, जिस वजह से पॉइंट धर्मवीर को मिला है। जी हाँ, देख सकते हैं वहां पर रिप्ले में नेट से जा टकराई शटल जरूर, लेकिन भाग्य का साथ मिलता हुआ कौशल धर्मवीर को और उसके साथ एक अंक की बढ़त मिलती हुई कौशल धर्मवीर को। शोभन, You have to obey my instruction. When I say don't, you should. Okay, play. Yes, absolutely. As you mentioned, it's going to be one heck of a contest. Edge of the seat kind of a stuff. 16-15. But Kosal, what a player he has been. For a moment he was looking down and out, and then what a comeback from the southpaw. Service over. Gave a point away. 16 all. Equalizer, 16-16, and both the players looking in ominous touch, especially Priyansu, trying to impose himself over his opponent, Kosal. Well, tried to be slightly over. cheeky there, 17, and 16. Kosal picks up another point. He is leading, 17-16. So no time to settle for Priyansu. Service over. Excellent 17 reaction there. And all. good reflexes. And quite vocal there, Priyansu. 17 all. Good rally. Oh, excellent smash and lovely shot there. 18-17. That jump smash. There's the jump, and he's just timed it perfectly there. The pace of the shuttle was quite good. Travel at the rate of knots. Good net play. Oh, the master doing the trick. 19-17. Excellent footwork, and at the very last moment, the finesse. Priyansu is looking quite confident out there. And I believe that he's all set to take this game away from Kosal. Good return. Ah, 20. too good there. Game point 17. He was absolutely perfect there. That smash down to the surface. Just 1 point away. A halt in the play. Both the players taking some time off. Just one good shot. Can Priyansu do it? Pressure will be on Kosal. He has looked ordinary after that 16th point. Just been able to manage one, and 3 straight points for Priyansu. I guess he needs some medical attention. Yes, he's hurt his little finger. जी हाँ, चोटिल हो गए हैं यहाँ पर कौशल धर्मवीर, जिस वजह से
ये छोटा सा विराम इस मुकाबले में उनको जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल टीम है, वो अटेंड करते हुए 20-17 से आगे इस समय प्रियांशु रजावत और कौशल धर्मवीर अभी भी 3 अंक से पिछड़ रहे हैं। हालांकि स्कोर लाइन आपको ये बताएगा कि 3 अंकों से पिछड़ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया है इस मुकाबले में। ये मुकाबला काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, काफ़ी रोमांचक रहा है दोनों खिलाड़ियों के बीच। इस समय प्रियांशु 20-17 से आगे चल रहे हैं और इससे पहले प्रियांशु रजावत ने मिथुन मंजुनाथ को हराया था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपने, और जिस वजह से सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किए हैं। यहाँ पर प्रियांशु सर्व करते हुए और बेहतरीन क्रॉस कोर्ट वहां पर। इसके साथ ही इस गेम को अपने नाम कर लिया है प्रियांशु रजावत ने। शानदार तरीके से 21-17 से पहले गेम को अपने नाम किया है और कौशल धर्मवीर के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव बनाए रखने में सफल रहे। हालांकि बार बार कौशल अपना प्रयास जारी रख रहे थे, बार बार वो कमबैक कर रहे थे, लेकिन आखिर में अंत में इस मुकाबले को 21-17 से अपने नाम करने में सफल हुए हैं प्रियांशु रजावत। तो पहला गेम यहाँ पर इस पुरुष सिंगल्स का पहला सेमीफाइनल में समाप्त हुआ है, जहाँ पर प्रियांशु रजावत 21-17 से कौशल धर्मवीर को हराया है। ओडिशा ओपन 2022 का ये शानदार प्रतियोगिता, ओडिशा में पहली बार BWF सुपर 100 चैंपियनशिप हो रहे हैं, ओडिशा ओपन 2022। और इसके कल इसका आखिरी दिन है, कल फाइनल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आज के सेमीफाइनल मुकाबले हम आपके लिए दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर लेकर आए हैं। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम। कटक उड़ीसा में काफ़ी दिनों तक खेलों का प्राण केंद्र रहा है, जहां पर नेशनल गेम्स जो राष्ट्रीय खेल हैं वो 2-2 बार आयोजित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस यहां पर खेले गए हैं। बहुत सारे फुटबॉल के प्रतियोगिताएं संतोष ट्रॉफी से लेकर फेडरेशन कप तक यहां पर खेले गए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले, हालांकि कुछ साल पहले यहाँ पर कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था 2019 में, और उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले इसी जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेले गए थे। लौटते हैं जो मुकाबले हम कवर कर रहे हैं उसके ऊपर। यह है पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल, जिसमें प्रियांशु रजावत और कौशल धर्मवीर, भारत के 2 युवा उभरते हुए खिलाड़ी, एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते हुए। प्रियांशु ने पहले गेम को अपने नाम किया है, दूसरे गेम में लेकिन शुरुआत उतना अच्छा नहीं उनके द्वारा, अंक गवाया और पहला अंक दूसरे गेम में कौशल धर्मवीर के पक्ष में। Well, good shot there. That drive onto the body of the opponent. Priyanshu was caught napping there. He was not sure about the pace of the shuttle. Give a point away. Well, the second shot made the difference. Even though he has 1-2. won this point because the shuttlecock was outside the baseline, but the second shot was a terrific response from the right-hander. Lobbed it there. Service over. 3-1. 3-1. Good comeback from Kosal. After losing the first set, the second set he is ready. He's ready to fire. Service over. 2-3. Big game for him. And for Priyansu, he just needs to let the pressure. Wow. Tremendous. 3. Brilliant footwork, and then that skill of twisting his forearm and
Fantastic smash. Excellent gameplay from Priyanshu. He's looking dangerous. Talking to himself. Very much needed. Service over. 4-3. Another blip. Kosal leads again, 4-3. He's quite calm under pressure, is Kosal. He's not giving anything away. Just got a poker face. Service over. 4-all. There's a roar of winning that point. Priyanshu. Yes, jubilation for him. But I just feel Kaushal is quite a canny character. Even though he is falling a bit short. Hold. Ah, good one there. Service over. Brilliant comeback. 5-4. Had this presence of mind of attacking the body of the opponent and bagging that point. Kaushal was quite clinical there in the last shot, and then 6. making another mistake was 4. Priyanshu. Good fight back. This game is hanging in the balance. Oh, gave it away. Also get a 7, feeling that 4. Kaushal is having his nose in the front. 7-4. Priyanshu is leading. 1 set to nil. The direction was wrong. 8-4. He's disappointed. Had all the time in the world to hit that, but then that drift away. Service over. 5-8. 8-5 से आगे चल रहे हैं कौशल धर्मवीर इस समय। हालांकि पहला गेम प्रियांशु अपने नाम करने में सफल हुए थे, उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार था। इस मुकाबले में अभी तक ये दूसरे गेम में कौशल धर्मवीर हावी होते हुए अपना बढ़त को कायम करते हुए 3 अंक से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर एक अनफोर्स्ड एरर, नेट पर मार बैठे। सर्विस प्रियांशु अपने पास रखेंगे। 20 वर्षीय प्रियांशु राजावत भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं पहले ही, और ओडिशा ओपन में भी उनका प्रदर्शन अभी तक काफ़ी बढ़िया रहा है। और क्या वो कल निर्णायक पड़ाव तक पहुंच सकते हैं, क्या वो कल फाइनल खेल सकते हैं, बहुत कुछ निर्भर करेगा आज के इस मुकाबले में, और ख़ास तौर से इस दूसरे गेम में, क्योंकि पहला गेम जीत चुके हैं, दूसरा गेम जीतकर इस मुकाबले को अपना नाम करना चाहेंगे और फाइनल का टिकट हासिल करना ज़रूर चाहेंगे प्रियांशु राजावत। जबरदस्त मैच, छलांग लगाते हुए पूरी तरह से अपने विपक्षी के खिलाफ हावी होते हुए, ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन, कोई मौका नहीं कौशल धर्मवीर के पास। हालांकि अपना बायां हाथ स्ट्रेच करके पहुंचना चाहते थे, लेकिन रिटर्न कर नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए वहां तक, और ये बराबरी का अंक मिला है प्रियांशु राजावत को। इस बार स्मैश लेकिन दिशाहीन, सही नहीं रख पाए दिशा, यहाँ पर गलती उनके द्वारा बाहर मार बैठे, जिस वजह से पॉइंट मिला है कौशल धर्मवीर को। तो बराबरी तक पहुंचने के बाद एक पॉइंट गवाया जरूर, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट हासिल करने में सफल, मजबूर किया कौशल धर्मवीर को नेट पर खेलने का, और गलती कौशल धर्मवीर के द्वारा, जिस वजह से अब स्कोर लाइन 9-9 पर बराबर ये दूसरे गेम में। अपने शॉट्स में काफ़ी मिश्रण करते हैं, प्रेडिक्टेबल नहीं है, आप पहले से आप पूर्वानुमान नहीं कर पाएंगे कहाँ मारने वाले हैं प्रियांशु। यही उनकी खासियत है उनके खेल में, अभी तक वो काफ़ी शानदार तरीके से झलक उसका देखने को मिला है इस मुकाबले में।
ये रैली काफी लंबी जरूर गई, लेकिन अंत में कौशल धर्मवीर की गलती बाहर 9. मार बैठे शटल को। देख सकते हैं आप एक बार फिर से, लंबी रैली चल जरूर रही थी और बहुत बढ़िया जजमेंट वहां पर प्रियांशु की। अंतिम मौके पर अपने रैकेट को वहां से निकाला। उन्हें पता था कि शटल बाहर जा रही थी और अब बढ़त प्रियांशु के पक्ष में 10-9 से आगे। और पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, मानसिक रूप से एक सकारात्मक संकेत होता है जब आप मिड गेम ब्रेक में जाते हैं, और यहाँ पर 11-9 फिर से एक बार मिड इटावा। गेम ब्रेक में एक बढ़त के साथ जा रहे हैं प्रियांशु राजावत। ये दूसरे गेम में मिड गेम ब्रेक, इस समय 11-9 से प्रियांशु राजावत आगे चल रहे हैं। शोभन, Priyanshi dominating once more. That has been the order of the day. 1-0 and now 11-9. He's looking confident. He has also got a bossy nature when it comes to his attack. Important advice is there from the coach. And there is Kossel, the poker face lad. 20 seconds. 20 seconds. Has got a couple of tricks up his sleeve. He's quite a muted character, but when it comes to the court, he's quite agile. But Priyanshu has been able to replicate what he did in the first game, exploiting 11-9. all the chinks in the armor Play. that Kossel has. Well, depth touch. Service over. 10-11. Softest was Priyansh. Beg your pardon. Was Kossel. The southpaw is. It's a good retrieve there. Excellent shot. Service Kaushal over. had no idea 12, whatsoever 10. what Priyanshu was doing. And lot of class and ability from Priyanshu. And he leads once more, 12-10. Okay, lunge. Okay. If this is the way it goes, then I'm afraid that Priyanshu will wrap it up quickly. Excellent smash. Again, quite vocal 13. on the court. Doing his job to brilliant effect there. The jump smash and cross court. Everything right about that stroke. This is the semi-final, number 1 in the men's singles category. Priyankshu Rajawat and Kaushal Dharamveer. Both are promising and 14, they 10. exude a lot of confidence and also energy. Rajawat had already pocketed one game and also is leading in the second game, 15, and 10. the rest of the things we have to wait and watch and see. The racket will break, the shape is gone. Can I just cut No, no, no. 10 seconds? Rajawat to serve. Sir, it will break. No, no, play. At 16-9. Rajawat Service over. was trying to 11. put it as 15. mass in that way, and it just landed upon the net. 12. 15.
Oh, beautiful placing on the part of Rajavat, Service over. 16. and was able 12. to catch Kausal in the wrong foot, and he was not able to fall back onto the right side. Just in the nick of the time, that was a surprising placing came. And the same thing he tried for this second point, and that was not to be. Shruti Mishra, India versus Shri Vedya Guruzada, India, and Ishika Jaiswal, USA. Umpire Mansoor Sagar Jochen, Iran. Service judge and Southpaw Kausal India. was trying out Service for a over. better placing, 13. just to put 17. into the difficult side of Rajavat, but Rajavat was there in the nick of the time, but nothing happened. Agility and alertness, things are to be seen in the players. Great return of the smash. Service over. 18. 13. Beautiful backhand return from Kausal. 19. 13. Rajavat serving. Service over. 14. 19. Kausal serving at the moment. Oh, Service Kausal over. found it very difficult 20. to Match lift point. it 14. in the way the pressure was there, and the footwork was definitely wrong, and he fell short of the reach. Game. Calculation on the part of Rajavat had been tremendous. And this is the end of the second game. Match won That by went in favour of Prayanshu Rajavat. Pravatat, 21-17, 21-14. So that was the end of the game, and let's see how they moved upwards. Excellent finish there from Priyanshu Rajawat. Showing his prowess as a badminton player. 21-17, 21-14. His boss this match. The tall figure using his height to very good effect. Everything going right for Priyanshu Rajawat and for Kausal. A lot of lessons to learn. He has to leave the big stage. But then Kausal winning the game and go on to play the finals of men's singles Odisha Open 2022 here at JNIS Cuttack. This tournament has been a success in itself. Ability is nothing without opportunity, and Odisha has been able to provide the opportunity to a lot of settlers, a lot of players, fans, families involved in this tournament. A lot of emotions and reactions. The second game is just gonna start. If you can look in the court 2, that will be between Ghorpade and Mishra. Will lock horns with Kurzada and Ishaka Jaiswal from USA. That is also will be a cracker jack of a contest.
Fingal look, some excellent smash there. That is, of course, women's doubles happening in court number 2. But this has been a great tournament. Match of Court 1, men's doubles. Vasant Kumar Junior and Asif Surya, India versus Ravi Krishna ES and Shankar Prasad Uday Kumar, India. Umpire Sailesh Kulkarni, India. Service Judge Hearing Arvind Meher, Iran. Yes, there will be the men's section, first doubles, Hanumanaya and Rangana Surya. They'll be playing against the Kumar and Savdaya. This is going to be one of the interesting match. Uday Kumar and partner, they'll be playing versus Hanumandaya and Rangana Surya. This is going to be the battle of prowess and energy, and let's see what happens. Rangana Surya and Hanumanaya. Uday Kumar and partner. Both the sides are from India. And what happens? A lot of excitement from the foreign players was expected, but at the last moment, many of the players coming from overseas, they opted out because of a number of problems, including the COVID-19. However, no way the standard of the tournament has dampened. Of course, the interest of the spectators definitely has dampened, because the entire tournament of first edition of Odisha Open 2022 is being organized sans spectators in this beautiful Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack in Odisha. And that is the way everything is going on, and the best of action in the badminton talents from the country, and also some of the budding talents from overseas. They are now fighting it out, their talents and skills and their prowess here at the arena of Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack. And if we look at the arrangement of the tournament, the first edition of Badminton World Federation, Odisha Open Super 100 International
badminton tournament. Is being organized under the aegis of Department of Sports and Youth Services of Government of Odisha, with the technical collaboration from the Badminton Association of Odisha, Badminton Association of India, and Badminton World Federation. Ready to play? And the entire tournament is being played from 25th of January to 30th of January. Tomorrow is the final day, and we would be watching the apex players, the top ranking players in the circuit here at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium. It's also called the Odisha Open 2022, and this is the third tournament of 2022 under the aegis of Badminton World Federation World Tour, and is the first edition of Odisha Open after it was rescheduled from Hyderabad Open. 698 players, they were registered to join the tournament, but it so happened that 350 players, they turned out from 17 countries. Here, most of the players, they opted out of the tournament. And the credit for Indian performance shall definitely Ladies go to and the Indian gentlemen, coach Pulela on my Gopichand, right, who himself has brought Asit Surya a number of laurels and for India Vasanta on many, many Kumar, occasions. Hanumaya, No Ranganatha, elaborate ceremony, India. opening ceremony has been held And on so my far, left, Shankar following the Prasad Uday COVID-19 Kumar, protocol, and also and there Ravi will be no Krishna PS, elaborate closing ceremony. India. And all the games Asit are being Surya to played serve in to empty Ravi Krishna stands, PS. and Love all the badminton lovers, they had to Play. satisfy himself with the program that we are sending live and exclusive on Doordarshan Sports. And the shuttle has been put into the flight in the first semi-final of the men's doubles in the category. One Hanumanaya love. and Rangana Surya and Uday Kumar and partner. The first point pleased by Uday Kumar and partner. Out down the line smash. Oh, moving like tandem. It's all synchronization of love. action that we get to see. Go! Uday Kumar. 3 love. 3 love. This is how Uday Kumar and partner has moved. Service over. Uday Kumar and 1, partner, 3. they both are right-handed players. And understanding has been superb, whatever we have seen so far. Service over. 4-1. Uday Kumar and partner to serve 4-1. Service over. 2-4. Oh, it landed on the net. Power was there, punch was 3, there, 4. but it all went wrong. So Rangana Surya and partner, they move up to 3 at 3-4, serving Uday Kumar and partner. All 4 of them, they look quite promising, full of confidence. Oh, beautiful smash that was, and return was also indeed superb. Aggressive 4 stroke all. was there, and the return of smash was also superb and very timely.
At 4 all, they pitted against each other in the 5 first 4. semi-final of men's double section. Rangana Surya 5-4. Oh, the rally has been superb this time. Service over. 5 all. And now 5 all, Uday Kumar and partner to serve. Oh, the understanding has been superb, Service over. and they were able to 6 5. turn the game at least point in their favor. Uday Kumar. At 6-5, serving Rangana Surya. Service over. 6 all. It's all 6 all. They're moving nail to nail, neck to neck. Both the sides, they have equal forte and equal capability as it appears to be. Service over. 7 6. Uday Kumar, don't shout before shuttle falling. Okay? Yeah. Play. Great mass, and the return has been superb also, very timely. Indeed, it's a thing to be watched. Oh, great rally that was. But still then the Service point over. came in favor of 7 Rangana all. Surya. And they all move in the same way, 7 all. In the first game of the match, semi-final, number 1 in the men's doubles. Oh, that was a wonderful piece of shot. Service over. 8 7. And Rangana Surya and partner, they were caught in the same wrong foot, and they were not able to fall back to reach for the shuttle. And that makes Uday Kumar and partner stay at 8-7, serving to Rangana Surya. Nine 7. That's wonderful. The exchange of shots, the backhand to the forehand. Uday Kumar falling back on the forehand and allowing the partner to take the shuttle on the backhand. That was a wonderful piece of understanding that we saw here. Yes, that was a great piece of action. 10 7. A winner smash. Uday Kumar partner moves up to 10-7. So that is the way it appears that Uday Kumar and partner, they would be able to
if this is the way they move, 11, at least 7, they would be able to interval. pocket the game. जी हाँ, निश्चित रूप से लगातार अंक अर्जित करते हुए मिड गेम ब्रेक तक पहुंचा है ये मुकाबला। 11-7 से इस समय रवि और उदय कुमार आगे चल रहे हैं। हनुमैया और सूर्या के खिलाफ ये है पुरुष युगल सेमीफाइनल मुकाबला, जहां पर भारत के दो जोड़ी एक दूसरे के खिलाफ यहां पर आमने सामने हो रहे हैं। जहां तक देखा जाए तो ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक शुरुआत ज़रूर रहा था। इसमें बिल्कुल दोनों जोड़ियां एक दूसरे के साथ चल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा था। लेकिन लगातार मिड गेम ब्रेक तक 3 अंक 4 अंक अर्जित करने के बाद मिड गेम ब्रेक को 4 अंकों की बढ़त के साथ रवि और उदय कुमार इस समय आगे जा रहे हैं। यहाँ पर विराम के बाद ये मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ हनुमैया सूर्या और रवि और उदय कुमार के बीच ये मुकाबला। रवि और उदय कुमार इस समय सर्विसिंग के पक्ष में और पहले ही मिड गेम ब्रेक के बाद पहला पॉइंट अपने नाम करने में कामयाब रवि और उदय कुमार। तो अनफोर्स्ड एरर करने के लिए मजबूर कर दिया था वहां पर 12-7 से आगे इस समय रवि और उदय कुमार। तो पुरुष डबल्स का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला, भारत के दो जोड़ी आमने सामने और लगातार अंक अर्जित करते हुए रवि और उदय कुमार आगे बढ़ रहे हैं। That is the way they are moving. Uday Kumar and partner 13-7. Not a small score by any standard, and if they are able to maintain their tempo, obviously the game will be theirs. Service over, 8-13. It's a break now. Rangana Surya. Service over, Uday Kumar 14, and 8. Partner gaining an advantage this time. Service over, 9-14. Rangana Surya and Hanumanaya, they're doing a work coolly and steadily, and Uday Kumar and partner, they're in a hurry to gain as many points as Service possible, over, and 15, this time 9. they have the advantage because they have gained another point. And it may give them a lead in the match, because they are only sort of a few points in the first game. 16-9. And the amount of aggression, the amount of dominance that they want to put on their opponents, that is a thing to be watched. Because psychological impact is also very, very important on the performance of the players there. Service over, 10-16. So 10-16, this is how Rangana Surya and partner, they play against Uday Kumar and partner. 16-10 की बढ़त एक बड़ी बढ़त मानी नहीं जाती है, क्योंकि बैडमिंटन का मुकाबला और बैडमिंटन के मुकाबले में कब कैसे पासा पलटे ये आप नहीं कह सकते। और यहाँ पर गलती जिस वजह से एक और अंक मिला है हनुमैया और सूर्या को अपने सर्विस में अंक हासिल करते हुए। 16-11 की बढ़त ज़रूर है, लेकिन ये फासला धीरे धीरे घटता हुआ हनुमैया और सूर्या के पक्ष में, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये मुकाबले को और ज़्यादा रोमांचक बनाएगा।
हालांकि अपने शॉट्स में काफी ताकत झोंक रहे हैं उदय कुमार और रवि, जिस वजह से यहाँ पर Service एक over, अंक अर्जित करने में सफल रहे। 17-11. देख सकते हैं आप एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से छलांग लगाते हुए उदय कुमार का और उसके बाद रवि कुमार का स्मैश, और रवि कुमार का स्मैश फिनिश करते हुए और पॉइंट उनके पक्ष में जाता हुआ। फिर से रवि कुमार का जबरदस्त स्मैश, इस बार 18-11. शटल तक पहुंचे जरूर थे लेकिन रिटर्न नहीं कर पाए, जिस वजह से पॉइंट एक बार फिर से रवि और उदय कुमार की जोड़ी को 18-11 से आगे इस मुकाबले को जल्दी ख़त्म करने के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब यहां से सिर्फ 3 अंक चाहिए रवि और उदय कुमार को इस मुकाबले में पहला गेम को अपने नाम करने के लिए, और यहां पर पहला गेम जीतते हुए एक पांव फाइनल पर में रखना ज़रूर चाहेंगे। गलती यहां पर मार बैठे नेट पर 19-11. हनुमैया और सूर्या, एक और अंक गवाया है यहाँ पर। तो 19-11 से आगे रवि और उदय कुमार। सर्विस रवि करते हुए और इस बार बाहर मार बैठे। काफी Service देर over, बाद एक अंक मिला है 12, हनुमैया और सूर्या 19. को। क्या यहाँ से वो वापसी कर पाएंगे? क्या यहाँ से इस मुकाबले में वो लौट कर आ पाएंगे? इतना आसान नहीं लग रहा है इस गेम में, और इससे और ज़्यादा कठिन होता हुआ, क्योंकि Service over, अनफोर्स्ड एरर 20. Game पहुंचा point, दिया है 12. रवि और उदय कुमार को गेम पॉइंट तक। 8 गेम पॉइंट्स बचाने होंगे अगर इस गेम को जीतना है, जो कि कठिन लग रहा है इस समय हनुमैया और सूर्या के लिए। और यहाँ पर बाहर इसके चलते ये गेम, ये पहला गेम इस पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में रवि और उदय कुमार ने अपने नाम कर लिया है 21-12 से। दूसरे भारतीय जोड़ी हनुमैया और सूर्या को यहाँ पर पहले गेम में हराया है रवि और उदय कुमार ने। The way Uday Kumar and partner began the first game, anybody who was watching their movements and the play in the court would have a feeling that they were going to win the first game, and that is the way it happened. And if they are able to maintain their tempo, and if they are able to have the confidence, obviously they will be able to move up to the finals in 2-0. But that's a thing I cannot predict, because Rangana Surya and Hanumanaya, they are not to be miscalculated. Of course, they can make a tremendous recovery to give Uday Kumar and partner a strong fight. But whatever that is, Uday Kumar and partner, they have the advantage of clinching the first game at a score of 21-12. The difference is not small by any standard, and that speaks the confidence level, and that also speaks the maneuvering capability that they had in the first game. And let's see what happens. And they will be pitted against each other now. They are facing each other in the second game of the first semi-final in the doubles category of men's section. Ready? Uday Kumar to serve. Second game, love all. Play. Great smash, and return was superb, and this time the return was not there on the part of 1 love. Rangana Surya. So there was the mistake, so they had to concede 1 point, the opening point in the second game, to Uday Kumar. Great backhand return. Service over, 1-all. At 1-all, Rangana Surya serving. Great forehand smash, and there was no return. Service over, 2-1. And Rangana Surya was not able to lift it out. Ultimately, they had to concede 2 points, the second point rather, I should say. The footwork has been tremendous, and that is the way they have to stay put in the, particularly in a game of doubles, and that is what they have been showing.
And this is the result of the tremendous amount of practice they had in the academy. Service over. 2-3. Rangana Surya. Service over. 4-2. At 4-2, Uday Kumar to serve. Five, 2. The tempo is maintained properly. The momentum has been so far superb. Oh, great smash, and return had been superb. The first time the return was better, and the second time 6-2. the footwork was wrong, so they were not able to put it back to the opponent's court. And Uday Kumar, partner, 6-2. The gap is becoming wider and wider. Let's see what happens, what is in the store. Service over. 3-6. Three, 6. Service over. 7-3. 7-3. So the gap of 4 is maintained. This is the way they had began, with a long gap of 4 points. So Chiranjeevi, if this is the way they progress, Service obviously that will add to their 4, confidence level 7. also. So however, this time Rangana Surya and partner serving at 4-7. जी हाँ, आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा ज़रूर होगा रवि और उदय कुमार का। जिस तरह से पहले गेम को एक बड़े अंतर से जीता और उसके बाद दूसरे गेम में भी अभी तक आगे चल रहे हैं। हालांकि हनुमैया और सूर्या को एक अंक ज़रूर मिला था पिछले मर्तबा, लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बेहतरीन रैली और अंत में क्या शानदार फिनिश वहाँ पर, जिस वजह से रवि और उदय कुमार को एक और पॉइंट मिला। बेहतरीन स्मैश लगाते हुए 8-4 से इस समय आगे चल रहे हैं रवि और उदय कुमार। वहीं दूसरी ओर हनुमैया और सूर्या पीछे चल रहे हैं। उनकी ये कोशिश होगी कि इस गेम को जीतकर इस मुकाबले को धकेले निर्णायक गेम तक लेकर जाएं, लेकिन शायद उसमें सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से बेहतरीन प्लेसमेंट, अंतिम मौके पर फेक किया उन्होंने और बैकहैंड रिटर्न उनका बहुत ही बढ़िया। पहुंच नहीं पाए वहां तक हनुमैया, जिस वजह से एक और पॉइंट मिला है। 9-4 से आगे चल रहे हैं इस समय रवि और उदय कुमार। भारतीय खिलाड़ी चारों भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर गलती इस बार सूर्या की नेट पर मार बैठे अनफोर्स्ड एरर लेकर पहुंच गया है। पॉइंट्स टैली 10-4 तक। रवि और उदय कुमार का बढ़त इस समय 6 अंकों की, और मिड गेम ब्रेक में एक बार फिर से अच्छी बढ़त के साथ जाएंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर एक गलती जिस वजह से यहाँ पर एक अंक गवाया। 10-5 हालांकि आगे चल तो रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर क्या वापसी कर पाएंगे सूर्या और हनुमैया, ये देखने वाली बात है। और बेहतरीन लगातार 2 अंक मिल गए हैं यहाँ पर हनुमैया और सूर्या को। After a long time, a beautiful shot came from Rangana Surya and Hanumanaya. If that is the way they start playing, obviously there will be a recovery, and that will upset the apple cart of Uday Kumar and partner. Seven, 10. Rangana Surya and Hanumanaya, they have made some amount of recovery because they have been able to lessen the gap at 7-10. Service over. 11-7 interval. But it's same thing. Again, 4-point gap has come back to the booty of Uday Kumar and partner. But whatever
we can say about this game, it all must conclude that both the teams, they are playing with their complete energy. They are giving 100% of their game, and that is what is expected from them. But the way they began originally, it was looking one, to be a 20 lopsided seconds. game because Uday Court Kumar one, and partner, they looked more 20 promising. seconds. But Rangana Surya and Hanumanaya, they are also doing a comeback, but not in form of the points, but also in form of the action that 11, we have been seeing. 7. Let's see if they are Right. able to convert their action into the point. Service over. लगता है आप के 8, सवाल का 11. यहाँ पर जवाब मिल गया है। सूर्या कोशिश कर Yes, रहे they हैं came to 8 and 11. और सर्विस भी उनके पक्ष में है इस समय। The same way they are moving up. Now they are 9, able to lessen 11. the gap. It's 9 and 11. जी हाँ, अंतर को घटाते हुए अब सिर्फ 2 अंकों का फासला है और सर्विस भी उनके पक्ष में है, लेकिन यहाँ से वापसी कर पाना इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि इस मुकाबले को अगर अंतिम गेम में धकेलना है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है और बढ़ भी रहे हैं। एक 10, और 11. अंक बटोरने में सफल हुए हैं हनुमैया और सूर्या। आप देख सकते हैं एक बार फिर से मजबूर कर दिया आगे आके रिटर्न करने का, जिसमें सफल नहीं हो पाए और जिस वजह से अब फासला सिर्फ 1 अंक का। How that happens? Now they are all in the equal 11 footing. all. At 11 all. And Uday Kumar and partner, they have to put a check on the movement of Rangana Surya and Hanumanaya, if at all they think of winning the match. Oh! 12, 11. Obviously the luck is favoring Rangana Surya and Hanumanaya because last 2 points have mostly been clinched through the luck than through the skill. Service over. 12 all. 12 all. Great smash. The return has been superb. Thirteen, 12. Play. Oh, it was a beautiful Service piece over. of smashing shot 13 that came all. from Rangana Surya. A correction that came from Hanumanaya, of course, the partner of Rangana Surya. Again, they are pitted against each other, 13 all. My God, this was a piece to be watched and 14, appreciated. 13. Surya. Just relax. The last shot, the smashing shot that came from Uday Kumar. A correction that came from Rangana Surya. It was not at all possible Right. on the part of Uday Kumar and his partner to come up and reach to lift it up. Fifteen, 13. Service over. 14, 15. 14-15. Uday Kumar and partner to serve Hanumanaya and Rangana Surya.
Service over 16-14. When the opponent was caught unaware, when he was little carried away with the thoughts which is not supposed to be seen on the court, that is the way the opponents, they clinched 1 point. Service over 15-16. Uday Kumar and partner at 15-16 serving. Great. Service over 17-15. What do you have to say, Chiranjeev, about the way the duo of Rangana Surya and Hanumanaya, they are giving a tough fight to Uday Kumar and partner? Because that was not in the beginning. जी हाँ, और पिछड़ने के बाद जिस तरह से वापसी हुई है और जिस शानदार अंदाज से वो वापसी कर रहे हैं, एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो देखने लायक है। इस समय 18-15 से आगे 3 अंकों की बढ़त हनुमनैया और सूर्या के पक्ष में, जो कि हम कोई भी सोच नहीं रहे थे पहले, लेकिन यहाँ पर सर्विस में गलती, ये शायद इस समय आशा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन गलती हो चुकी है, जिस वजह से सर्व करने का मौका अब मिला है रवि और उदय कुमार को। क्या यहाँ से ये वापसी को आगे लेकर जा पाएंगे? जी हाँ, 19 पर पहुंच जाएंगे इस अंक के साथ, और सर्व करने का मौका भी उनके पक्ष में। इस समय हनुमनैया सर्व करते हुए, शानदार वापसी, शानदार प्रदर्शन, ये मुकाबले को और रोमांचक करता हुआ। यहाँ पर कहीं ना कहीं बार बार गलती करते चले गए, जिस वजह से पिछड़ रहे हैं इस समय रवि और उदय कुमार, लेकिन यहाँ पर एक अंक रवि और उदय कुमार को मिला है। फासला अब घटा है 2 अंकों तक, लेकिन जिस तरह से वापसी किए हैं, उसके बाद जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय, और एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं, एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि सूर्या और हनुमनैया कितने मोटिवेटेड हैं, कितने इच्छुक हैं अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए। सर्व करने का मौका इस समय रवि और उदय कुमार के लिए, लेकिन गलती, अनफोर्स्ड एरर। फिर से गेम पॉइंट तक पहुंच गए हैं हनुमनैया और सूर्या। ये हम उम्मीद नहीं कर रहे थे एक समय, जिस तरह से पहले गेम को जीता रवि और उदय कुमार ने, उसके बाद जिस तरह से दूसरे गेम में बढ़त हासिल की, ये हम लोग नहीं उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो कर दिखाया है, कामयाब हुए हैं उसमें और गेम पॉइंट तक पहुंचे हैं। हालांकि एक अनफोर्स्ड एरर, जिस वजह से एक गेम पॉइंट बचाने में सफल हुए हैं रवि और उदय कुमार। फासला 2 अंकों का है, यहाँ से भी रवि और उदय कुमार इस गेम को सील कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मुकाबले को आगे लेकर जाना है, इस मुकाबले को आखिरी पड़ाव तक लेकर जाना है, ले गए हैं यहाँ पर। Yes, they have equalized, and the third game will be played, and that will be the deciding game. And if that is the way Rangana Surya and Hanumanaya would have played in the first game, things would have been much, much different, and story would have been much, much different. And what we saw that Uday Kumar and partner, they slowed down a bit in the second game, and the advantage went in favor of Rangana Surya and Hanumanaya. Of course, they will have to prove their own power, punch and everything in the third and deciding game, and whoever wins the third game will obviously book a berth in the finals in the men's doubles category. And this being the first men's doubles semi-final, we'll have to wait and watch for more of action from the other games also. And this is the way. The first game was pocketed by Uday Kumar and partner, and the second game went in favor of Rangana Surya and his partner Hanumanaya. So Uday Kumar and partner, they're taking the last minute
tips from their coach. And obviously, they will be more useful to them this time when they come Court to 1, the 20 showdown in the seconds. third and Court the 1, final 20 game, seconds. the deciding game, so that a berth can be booked in the finals. This is the duo, Rangana Surya and Hanumanaya. Final game. Love Hanumanaya all. to serve. Play. Oh, that is One the way they have love. reached the first point in the third and deciding game. Service over. 1-all. Service Rangana over. Surya duo. 2-1. They have cleared the second point. The coordination between Rangana and Surya, they have been tremendous. They move like a tandem there. The synchronization is proper. And that is why they have been able to make a tremendous comeback in the second game. And obviously they will repeat their feat in the third and deciding game. 3-1. Rangana and Surya, both of them, they have a tremendous amount of flexibility and understanding on the court. 4-1. Oh, this the same feat has been repeated. 4-1. Rangana and Surya, they are moving upward. 4-1 against Uday Kumar and partner. Service over. 2-4. Service over. 5-2. Great piece of rally indeed that was. Service over. 3-5. Rangana and Surya duo, and they had to concede this point. But whatever that is, they are still up ahead at 5-3. Play. Wide coverage of the court this time. Service All over. four of them, they were moving 6-3. left way, right way. Wonderful piece of action that we have been watching here in the third and deciding game of the first semi-final in the men's doubles category. 6-3. Rangana and Surya duo, they have to serve. This is Rangana. Service over. 4-6. Four, 6, Uday Kumar serving. Oh! 5-6.
again. Service over. This 7. is the way they are 5. moving up. Rangana and Surya, they are not allowing a single chance to go like this, go wasted. Service over. 6-7. 6-7. Uday Kumar and Rangana Surya. Rangana and Surya. Seven all. With 7 all and 1 game all, this is how they are pitted against each other in the third and deciding game. Great smash, return was superb. Clearly the placing was superb. That is just saying in English, hit the iron when it is hot. So when the opponent had fallen down, and that is the way the placing was done, because he was very sure of clinching this point, and he clinched that point, and this is how Uday Kumar On court. and partner, they are at 8 to serve Rangana and Surya. Shuttle. जी हाँ, 8-7 की बढ़त इस समय, 1 अंक की बढ़त रवि और उदय कुमार के पक्ष में। और ये जो आखिरी और निर्णायक गेम चल रहा है, ये काफ़ी रोमांचक रहा है अभी तक। पहला गेम हालांकि रवि और उदय कुमार ने काफ़ी आसानी से जीत लिया था। दूसरे गेम में एक शानदार वापसी देखने को मिली हनुमैया और सूर्या के द्वारा। और ये जो तीसरा गेम है, जो निर्णायक गेम है, वहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इन चारों खिलाड़ियों ने सबका मनोरंजन ज़रूर किया है, क्योंकि इस समय एक अंक हनुमैया और सूर्या को मिला है, जिस वजह से बराबरी पर पहुंच गया है ये तीसरा और निर्णायक गेम। पुरुष डबल्स का ये है सेमीफाइनल मुकाबला, जहां पर वसंत कुमार हनुमैया रंगनाथ भारत के, उनके साथ हैं अशित सूर्या, और वो मुकाबला कर रहे हैं रवि कृष्णा पीएस और शंकर प्रसाद उदय कुमार के खिलाफ। ये चारों भारतीय खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद हैं। ओडिशा ओपन 2022 का ये सेमीफाइनल का दिन है। सेमीफाइनल के मुकाबले हो रहे हैं। यहाँ पर अब तक 6 मैचेस ख़त्म हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे मुकाबले खेले जाने बाकी हैं आज सेमीफाइनल के दिन। इसके बाद मेंस सिंगल्स का मुकाबला लाइंड अप है आपके लिए। दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं और कुछ इसी तरह का एक्शन देखने के लिए आप यहाँ पर ज़रूर आएंगे, क्योंकि शानदार तरीके से यहाँ पर देखिए हनुमैया और सूर्या ने ये अंक हासिल किया। रिटर्न करने में सफल नहीं हो पाए उदय कुमार, जिस वजह से हनुमैया और सूर्या को एक अंक मिला है। वो पहुंच गए हैं 9 पर। बढ़त उनके पक्ष में है अभी, और इस बढ़त को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है इस समय। ये तीसरा गेम है। यहाँ पर आत्मविश्वास और मनोबल की काफ़ी अहमियत है। जब आप मिड गेम ब्रेक में जाएंगे, लीड के साथ जाना पसंद करेंगे, और यहाँ पर गलती जिस वजह से बराबरी का अंक मिला है रवि और उदय कुमार को। देख सकते हैं आप, यहाँ पर रिटर्न करने में सफल नहीं हो पाए, नेट पर मार बैठे और 9-9 की बराबरी पर पहुंच गया है स्कोर लाइन। और काफी बढ़िया जजमेंट, काफी बढ़िया तालमेल। आप जब डबल्स खेलते हैं तो सूझबूझ और तालमेल की बहुत आवश्यकता होती है। वो दर्शाया यहाँ पर उदय कुमार और रवि ने। जाने दिया शटल को, दोनों नहीं, और शटल बाहर गिरी, जिस वजह से उनको अंक मिला है। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं ओडिशा ओपन 2022 के सेमीफाइनल के मुकाबले। और ग्रेट रैली दैट वाज, स्टिल देन one can see it in the slow action. This is how it ended, with the point getting in favor of Rangana and Surya.
Service over 11-10. Uday Interval. Kumar and Change partner. ends. Don't throw right. They move up to 11-10. With the change of the sides, we hope to see the change of action also. Court 1, 20 seconds. Court 1, 20 seconds. Rangana and Surya, they have Players on court. clinched the second game, while Uday Kumar and partner, they had clinched the first game, and this is how they are pitted against each other in the third and deciding game. Hanumaya. 11-10. Uday Kumar Play. serving at 11-10. Service over 11 all. Give shot. At 11 all, they seem to be full of promises. Light. They weigh the same pressure against each other. A beautiful Service placing over with lots of power. 11. And that yields one more point for Uday Kumar and partner. Oh, it's all neck to neck. Service over. Neck to neck, nail to nail. 12 And all. Rangana was, correction, Surya was able to put it across in such a way that the point was to be his only. Just Service eye to over. eye. The fight 13, is going on 12. and it is becoming more interesting. Even though they are not 12. exerting tremendous amount of power to their shots, but still then they are playing to their best of skill and ability, and that adds to the thrill here. Had the stadium been packed to the stands, obviously they would have enjoyed, the people would have enjoyed every bit of the action here. So that is a thing we don't see, and that must have dampened Service the over. spirits of the players in the 13, arena to some 14. extent, but people are getting to see and watch everything live and exclusive on DD Sports, sitting in the well comforts of their own homes. So ongoing is the second Play. semi-final, the men's doubles category. Oh, the return had been Service over. superb, but the luck 15, was not in their 13. side. It was a matter of a few inches, otherwise it would have been a different thing. No! 16-13. So Uday Kumar and partner, they move up to 16. 16 against 13 of Rangana and Surya. Service over. 14. Oh, close to their 16. heels. Moving with 14 to 16, that is Rangana and Surya. They don't like to while away at least a chance and opportunity to get a point. Service over. 17-14.
Little 14. mistake on the part of Rangana and Surya. That was Rangana. So he made a mistake and had to concede one more point to Uday Kumar and partner. 18. Just 3 points away from the match. Service over. 15-18. 15-18. Close on their heels. Rangana and Surya giving a chase to Uday Kumar and partner. Play. क्या इस मुकाबले में और ट्विस्ट बाकी है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 18-15 से आगे ज़रूर चल रहे हैं रवि और उदय कुमार। 16-18. At 16-18, Rangana and Surya, they would be serving Uday Kumar and partner. Thank you. Wait. Play. इस मुकाबले का रोमांच इसीलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि हनुमैया और सूर्या अपना गेम को कभी छोड़े नहीं है, हमेशा पकड़ के रखे हैं। हालांकि पीछे चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो कमबैक किया पिछले गेम में और इस गेम में जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, काफ़ी नेक टू नेक चल रहा है ये मुकाबला। उसका कारण ये है कि हनुमैया और सूर्या अपना पूरी तरह से अपना 100% दे रहे हैं इस मुकाबले में। वहीं दूसरी ओर रवि और उदय कुमार भी पीछे नहीं है इस समय। हालांकि 2 अंकों से वो आगे चल रहे हैं, वो लगातार अंक अर्जित करने के कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ पर इस स्मैश के साथ देखिए बेहतरीन तरीके से स्मैश के साथ एक और अंक अपने नाम किया है रवि और उदय कुमार ने। सिर्फ 2 अंक दूर इस मुकाबले में जीत हासिल करके फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए, लेकिन क्या उसमें कामयाब होंगे या फिर इस मुकाबले में और ट्विस्ट बाकी है? यहाँ पर फिर एक बार कमबैक कर सकती है क्योंकि एक अंक मिल गया है उन्हें और फासला 2 अंकों का रह गया है। इस समय हनुमैया और सूर्या पहुंच गए हैं 17 पर, रवि और उदय कुमार उनके खिलाफ इस समय 19 पर हैं। और ये है निर्णायक गेम पुरुष डबल्स सेमीफाइनल मुकाबले का। भारत के ही 2 जोड़ी यहाँ पर शिरकत करती हुई और इन्होंने काफ़ी रोमांचक प्रदर्शन दिया है, काफ़ी संघर्षपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला है। और इसी ऐसे मुकाबले को देखने के लिए लोग अपने टीवी सेट के सामने रहते हैं, क्योंकि ऐसे मुकाबले ऐसे रोमांचक मुकाबले आपको हमेशा पकड़ के रखती है। और एक और अंक मिल गया है यहाँ पर 18-19 की स्कोर लाइन। हनुमैया और सूर्या सर्व करते हुए, और क्या शानदार कहानी बनेगी अगर वो यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में मिड गेम ब्रेक तक पीछे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी कर बैठे, स्मैश उनका सही नहीं हो पाया। गेम पॉइंट के साथ मैच पॉइंट तक पहुँच गए हैं रवि और उदय कुमार, और यहाँ पर इस मुकाबले को जीत कर आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। 2 मैच पॉइंट बचाने होंगे हनुमैया और सूर्या को। सरोज जी, A slight mistake that did cost them a lot, so they have to fight it out very, very strongly, otherwise it will be too difficult. Everything will slip out of their own hands. Uday Kumar and partner, they have an advantage obviously. Game. That is the end of it. That is the end of the game. That is the end of the match. And Uday Kumar partner, they have clinched the match in 2-1. 2-1 game score. And this is how they move to the finals. 21-12. Uday Kumar and partner, they move on to the finals 21-18. by beating Rangana and Surya duo. जी हाँ, अभिनंदन चारों खिलाड़ियों को, क्योंकि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।
और दोनों चारों खिलाड़ियों को धन्यवाद देना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि ये मुकाबला अगर आप स्कोर लाइन देखें, पहले गेम में 12-21 से पिछड़ने के बाद दूसरे गेम में 21-18 से जीत हासिल करके तीसरे गेम तक धकेले, निर्णायक गेम तक गए। और निर्णायक गेम में भी एक समय ऐसा लग रहा था कि वो हनुमैया और रंगनाथा और अशित सूर्या की जोड़ी जीत सकती है, लेकिन 21-18 से हार गए। और इसी के साथ ये मुकाबला 12-21, 21-18, 18-21 से जीत हासिल किए हैं रवि कृष्णा पीएस और शंकर प्रसाद उदय कुमार ने। क्या शानदार प्रदर्शन! आप स्कोर लाइन देख सकते हैं, स्कोर लाइन से आपको पता चल जाएगा कि पहला गेम कितना एक तरफा था, लेकिन उसके बाद अपने गेम को, अपने खेल को किस तरह से उभारा, आगे लिया हनुमैया और सूर्या ने। लेकिन हालांकि भाग्यशाली नहीं रहे, अंत को इस मुकाबले में पिछड़ गए और फाइनल के रेस से बाहर हो गए हैं। तो इसका फाइनल भी कल खेला जाएगा, लेकिन अभी सेमीफाइनल के मुकाबले चल रहे हैं। ओडिशा ओपन 2022 में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और इसके बाद हम एक शानदार मुकाबला एक और बाकी आगे आने वाला है, जहां पर पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज और अंशल यादव, दोनों ही भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। जी हां, ये पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबला, जो अगला मुकाबला है यहाँ पर किरण जॉर्ज और अंशल यादव के बीच में, अभी से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले बता दें, आज सुबह महिलाओं का सेमीफाइनल था महिला सिंगल्स में, जहाँ पर उन्नति हुड्डा ने मालविका बंसोड को हराया था। उसके बाद मिश्रित युगल वर्ग में श्रीलंका की जोड़ी सचिन डायस और थिलिना हेंदावा, उन्होंने भारतीय जोड़ी को हराया था। उसके बाद एक ऑल इंडियन महिला सिंगल्स का सेमीफाइनल देखने को मिला, जहां पर स्मिथ तोष्णीवाल ने जीत हासिल की। उसके बाद ऑल इंडियन पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल देखने को मिला, जहां पर प्रियांशु रजावत ने जीत हासिल की। उसके बाद ये जो रोमांचक मुकाबला आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, वो था रवि कृष्णा पीएस और शंकर प्रसाद उदय कुमार के नाम। और आगे आने वाला मुकाबला है भारत के किरण जॉर्ज और अंशल यादव के बीच। Men's single, Kiran George, India versus Ansal Yadav, India. Umpire Fabio Vitto, Italy. Service judge Chilani Basha, India. किरण जॉर्ज, अंशल यादव सपोर्टा किरण जॉर्ज। Kiran George, Italy. इंडिया सॉरी सर्विस। फिर से एक ऑल इंडियन बैटल, एक ऑल इंडियन सेमीफाइनल पुरुष सिंगल्स में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि सामने हैं किरण जॉर्ज और अंशल यादव। दोनों काफ़ी तैयार नज़र आ रहे हैं, काफ़ी चुस्त नज़र आ रहे हैं। और ओडिशा ओपन 2022 जो कि एक शानदार प्रतियोगिता रहा है अभी तक, आज सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जा रहे हैं। और ये पुरुष सिंगल्स का दूसरा सेमीफाइनल है। पहला सेमीफाइनल जीतकर प्रियांशु रजावत फाइनल का सफ़र तय कर चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ पर दूसरे सेमीफाइनल में किरण जॉर्ज और अंशल यादव के बीच जो जीतेंगे वो जाकर फाइनल में प्रियांशु रजावत के साथ खेलने वाले हैं, फाइनल में प्रियांशु रजावत के खिलाफ भिड़ने वाले हैं। तो जैसे महिला सिंगल्स में भी एक ऑल इंडियन सेमीफाइनल देखने को मिला था, ऑल इंडियन फाइनल देखने को मिलेगा कल। वहीं पुरुष सिंगल्स में भी अंशल यादव, जो कि आपके सामने हैं स्क्रीन पर इस समय, वो खेल रहे हैं किरण जॉर्ज को। और जो जीतेगा कल एक ऑल इंडियन फाइनल में प्रियांशु रजावत के सामने रहेंगे। तो दोनों ही अपना वार्म अप करते हुए, प्रस्तुत होते हुए इस प्रतियोगिता के लिए। अंशल यादव बाएं हाथ के खिलाड़ी, उनके सामने किरण जॉर्ज। तो जैसे ये पिछला
मेंस डबल्स का सेमीफाइनल था, रोमांचक था, काफ़ी दूर तक गया, आखिरी पड़ाव तक गया और आखिर में रवि कुमार पीएस और शंकर प्रसाद ने जीत हासिल की। उसी तरह से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल है ये उतना रोमांचक हो, उतना संघर्षपूर्ण हो, ताकि जो घर बैठे हैं दर्शक, जो बैडमिंटन प्रेमी हैं आप लोग, आपको मज़ा आए और इस मुकाबले का लुत्फ आप डीडी स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं। ओडिशा ओपन 2022, ओडिशा के रौप्य नगरी, जो 1000 वर्षों का शहर कहा जाता है कटक, वहाँ के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, जो कि बिल्कुल बारावटी किले के अंदर मौजूद है, वहाँ पर खेला जा रहा है प्रतियोगिता। और इसका ये पहला संस्करण है और आज सेमीफाइनल के मुकाबले हो रहे हैं। कल सुपर संडे रहेगा और रविवार के दिन सारे फाइनल के मुकाबले यहाँ पर खेले जाएंगे। किरण जॉर्ज आपके सामने बिल्कुल तैयार, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाना ज़रूर चाहेंगे और ये युवा खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन है, एक अच्छा मंच है जहां पर वो अपना हुनर और प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। किरण जॉर्ज और अंशल यादव ऐसे में दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त ज़रूर रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सालों से एक साथ खेलते आए हैं, तो ये भिन्न पड़ाव देकर आए हैं और यहाँ पर उन दोनों को ये मौका मिल रहा है एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर वो आमने सामने होते हुए। जहाँ तक किरण जॉर्ज का सवाल है, उन्होंने एस डे को सेमीफाइनल मुकाबले में हराया था, उससे पहले चिराग सेन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराया था, माफ़ कीजिएगा, उससे पहले राउंड थ्री में चिराग सेन को हराया था और राउंड 2 में आर सतीश को, और पहले मुकाबले में भी किरण जॉर्ज ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पर अंशल यादव के खिलाफ किरण जॉर्ज, वहीं दूसरी ओर अंशल यादव ने मन्नेपल्ली को परास्त करने के बाद क्वार्टर फाइनल्स में सेमीफाइनल तक का सफर तय किए हैं और यहां से वो फाइनल का सफर जरूर तय करना पसंद करेंगे। सर्विस अंशल यादव के पक्ष में, धीमा शुरुआत यहां पर। बैडमिंटन मुकाबले में अक्सर वही होता है, थोड़ा धीमा शुरुआत के बाद गति पकड़ते हैं खिलाड़ी, और बिल्कुल वही होता हुआ यहाँ पर पहला अंक मिल चुका है अंशल यादव को और सर्विस अपने पास ही रखेंगे अंशल यादव। और यहाँ पर बाहर मार बैठे किरण जॉर्ज, गलती फिर से, जिस वजह से एक और अंक, लगातार 2 अंक लेकर एक अच्छी शुरुआत यहां पर अंशल यादव के पक्ष में। ये बहुत ही अहम मुकाबला होने वाला है, दोनों खिलाड़ी कोई किसी से कम नहीं है, अभी तक का सफर काफी बढ़िया रहा है दोनों का। अंशल यादव ने अपने तीसरे राउंड में एस प्रताप सिंह को हराया था, उससे पहले तालर ला को हराया था। आज किरण जॉर्ज को हराकर फाइनल तक जाना पसंद जरूर करेंगे। वही किरण जॉर्ज हार मानने वालों में से नहीं है, हालांकि अभी पिछड़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत समय बाकी है इस मुकाबले में। ये सिर्फ पहला गेम है और पहले गेम में अभी तक अभी फाइनली एक अंक मिला है किरण जॉर्ज को। गलती कर बैठे अंशल यादव, नेट पर मार बैठे, जिस वजह से किरण जॉर्ज के पक्ष में एक अंक, और यहाँ पर सर्व करते हुए किरण जॉर्ज। सरोज जी, this match promises to be more interesting. Service over. Because we have two 4-1 budding young players, Kiran George and Anshal Yadav. Anshal Yadav moves to 4 against 1. Kiran George is basically from Kochi, and he's Service from over. Prakash Padukone Academy of Badminton, and he has already one international title in his pocket, the Police International. And whereas Anshal Yadav is ranked 287 in the singles in the BWF rankings. So he holds lots of promises and also lots of sunshine. Well, let's see what happens in the arena right now in the second semi-final in the men's singles category here at the first edition of Odisha Open 2022. Being played at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack in Odisha.
Kiran Judge. Southpaw. Kiran Judge. Service over 6-3. Just a flick serve there. A beautiful forehand there was 7-3. just a cross court placing, and for which Kiran Judge was not able to lift it up. So Ansal Yadav at 7-3. Service over 4-7. Had it been a little away, just 1 or 2 feet away, then things would have been very different and it would have produced a different story altogether. However, George at 4 and Yadav at 7. The match don't believe in the fireworks, and no, that was not to be. It's a wide shot. 7-all. 7-all. That is how they pitted against each other in the first game of the second semi-final in the men's. 8-7. Judge coached in the academy of badminton. Oh, that was a great rally indeed. Service over And 8-all. ended with 1 more point to Ansal Yadav. Ansal Yadav and Kiran Judge. They are on equal footing, 8-all. Both of them, they play as if they don't have much pressure on Service them. over 9. And maybe 8. because it's all being played sans spectators here. The spectators' presence here to the packed galleries would have given a different turn and colors to the matches here, but that is not to be because of the COVID protocol. Ten, 8. 10. George at 10, serving Yadav at 8. Service over 9-10. Not a good shot that was. It's too wide a shot. Fault. Service over 11-9. Clearly interval. written that was Yadav, helping Judge to win 1 more point. Looking at both the players' games, what do you think? None of them, they have that fire punch in the games, but still then, they play as if they are making a good amount of practice. Yes, absolutely. And as you mentioned that the tournament is being played under the closed doors, the vibe is not 20 seconds. is not 20 there. seconds. But still, both of them able to inspire themselves within. And looking at Kiran Judge, he's quite heavy on his feet. When he just lands, there's quite a thump on the surface. But he's leading 11-9. 11-9. And at the other end, Ansal Yadav, quite a young man, up against Play. the class of Kiran Judge, a product of Padukone's academy. He will serve.
Service over. Nice play there 10, from Ansal 11. Yadav. It was there to be hit, and then at the very last moment, that jump and the smash. And bagging a point for him. Important play for a crucial juncture in this game. 11-10. Only 1 point behind is Yadav. That was a wide shot. Erratic 11 there. all. Kiran George not able to control the shot. And that was the equalizer. 11 all. There's that thump, and then 12, 11. Yadav leads. Yadav is on the charge. Straight 3 points for him. 12-11. This is going down. 13, 11. 13-11. The lead, a slim lead of 2 points. Challenging the baseline was Kiran George. Good flick shot, slice, and again, he's not able to control his 14, shots. To be very 11. honest, he's looking slightly off color, and he's giving a lot of chances to Ansal Yadav. You don't want to do that when you have taken a good lead. One more time. 15, It's 11. happening. The rub of the green going towards Ansal Yadav's way. 11-15 now. He'll be looking to close this game out. What a response. Tremendous from Kiran George. Service over. 12, Again showing his 15. authority on the court. 12-15. Both the men are quite agile, excellent footwork, play. good hands as well, wristy players. Dexterous is the word that comes to mind, and then again he has given it Service away. over. When 16, you're trying to hit 12. the shuttlecock so hard, then you should be trying to hit it above the net. Instead, he hits the net on the flush. At 16, Yadav serving George. 16-12. Good rally they are trying to continue. So 17 12. to Yadav and 12 to Judge. So at this point of the game, it holds tremendous amount of promise to Yadav. Just 4 points away from the game score. 18, 12. This is how Yadav is moving up. 18. Service over. 13, 18. Yadav was not able to fall back to take on this shot. A mistake, Service over. surely. 19, 13. Yadav at 19. Oh, he was clearly beaten. So Yadav was not able 14, to lift it up 19. because he had already fallen. So wrong footwork, it's definitely on his part. Okay. However, he has a clear advantage with a score of 19-14. But right now, 14-19, just to serve.
Oh, great rally that was, and Yadav was 15, beaten very 19. clearly. Of course, on the part of Judge, quite confidently. So this is the way George is inching ahead with a score of 15 against 19 of Yadav. Judge to serve at the point. Sixteen, 19. Seventeen, 19. Something is wrong with Yadav because he is not able to stay focused right now. Otherwise, he would have stopped himself from whiling away certain points like these. Four. 18, 19. Close on the heels of Yadav, it's 18 to 19. Judge to serve. Service over 20, game point 18. This is the game point for Yadav. Let's see if he's able to clinch the game. No, that was not to be. Service over 19, 20. 19 to 20, Judge to serve. Both are following each other very closely and quite triumphantly also. Game. First game won by Ansal Yadav. So this is the 21, end of the 19. first game that goes in favor of Ansal Yadav. So this was the second semi-final in the men's category, and Ansal Yadav was to pocket the first game, and if he is able enough to pocket the second game, his berth in the final is guaranteed. So let's see what happens in the second game, or let's see if the table is getting turned by Kiran Judge. Let's see what happens. So what do you have to say about it? If there could be a setback, or this is the way things will go on in the second game? I just get a feeling there is a bit of chance for Kiran Judge to come back into this game, even though that was a close contest, 21-19. It was not a lopsided one. So I just believe that Kiran Judge has something in him, and he will surprise everyone who is watching this live broadcast live on DD Sports. There's still a little glimpse, a little life left in this game. The second will be one to remember. So don't leave your TV screens, because the second game is going to be a sensational one. This is the second semi-final. Who will it be? Who will be the man who will face Prince Rajawat in the finals of men's singles Odisha Open 2022? 20 seconds. Time will tell. 20 seconds. There's the picture of concentration there. Kiran Judge knows that he has made a lot of mistakes in the first half, but again, as life gives you a second opportunity in this game, Second you'll game. also have another Love go at all. it. Play. But at the other end, Ansal Yadav has been dominant right from the word go, just continues. Oh, brilliantly done there Service from over. Kiran Judge. Love. Taking the risk, and as we know, risk is the down payment of success. Getting the success there. That cross-court smash. First
point in the second game has been taken by George. Obviously in a mood to fight Service it over. out, give 1 a tough fight all. to Ansal Yadav. George has a tremendous amount of experience 2 on his 1. shoulders. He had one international title, Police International. 3 1. And he's been coached in the Prakash Padukane Academy of Badminton, where all the best of talents in the country, they're picked for specialist coaching. Correction So out. obviously greater amount Service of over. expectations 2 3. are running high, and they are pinned to the shoulders of Kiran George. Let's see. He'll have to make a recovery in this second game if he has to reserve a berth in the finals. 3 all. 3 all at the moment, George and Yadav. Service over. 4 3. We can so find it in slow motion what exactly happened. Both had tripped, but 5 George to serve in 5-3. Six 3. Each addition of the points, they tell us a different story. 7 That is the 3. way the confidence level is also going up and up. Now it's 7-3. Service over. 4 7. It was just late, but it's out. Yadav is serving at 4-7. Oh, there comes a stinging over. shot from 4. George. Nine 4. George at 9. Serving Yadav at 4. That was a wonderful piece 10, of placing there. 4. Just getting one more point. called Let's before see the it in slow motion. How it landed there.
in the court, catching Yadav completely unaware. His way out, a wide Service shot over. even. 5-10. Six, 10. Slowly the game is picking up momentum. And both the players, Yadav and George, they are trying to outsmart each other. Oh, very strong-willed, quite a forceful 7-10. smash that came from Yadav. That is Yadav It's over. 11-7 interval. giving it a good stance, but that was not to be. No score for him. So George at 11 and Yadav at 17. This is the second semi-final in the men's 20 singles category, seconds. 20 being played seconds. between Ansal Yadav and Kiran George. Here on the court number 1 in the arena at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack, the venue of the first edition of Odisha Open 11-7. Badminton Championships, Super 100 2022. At 11-7, Kiran George. Oh, George must have Service considered this point, but 8, otherwise his 11. footwork and his flexibility had been superb. It was a superb display of skill, talent, and his own body conditioning. However, he had to concede this point in favor of Yadav. Service over. 12-8. At 12-8, George to serve. Looking at both the players, quite contrasting characters. If you look at somebody like Kiran George, who likes to take that initiative, and at the other end, his opponent is quite opposite. He's quite laid back, just wait for the things to happen. While Kiran George's best friend is the smashes, it can also lead to his downfall. In many a times, we have seen him caught napping. That's a good play. Oh, that was quite awesome there from Yadav. Service over. 9-12. Just showing his skill there and his power. Cross court there, and that dip at the very last moment. 12-9. Anshul Yadav is roaring, even though he's trailing. Another erratic strike, Service over. quite wide there, and 13-9. that self-belief is back when we look at Kiran George. He's leading by 4 points. So it has been quite a tremendous contest out here at Odisha Open 2022 semi-finals. 13-9. Just feel Kiran George needs to settle down.
He's leading, he's doing everything right. It's time for him just to wait and react. Another jump smash. That's his 14, forte. 9. That's his style. It is 49 now. And Kira George is oozing with confidence. He knows what he's doing out there in the middle. Good rally. Oh, what a rally that was. Service One has to over. admit 10, the skill and 40. strength. George had a fall there, but he rose to action immediately. And that proves his mettle and ability and also the agility also. That was great, and it's no surprise that he has a score of 14, well in an advantage against Yadav. Of course, the case of Yadav cannot be ruled out. They are giving a fight to each other, obviously. Slow and steadily, the match is gathering momentum. Please. But still then, the excitement, the fireworks that generally a spectator expects from these type of players from the national rankings is not there. Maybe because they are playing to the empty 10, stands here 40. in the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack. Service over. 15, 10. Judge Service over. losing one more 11, point there. 15. Service over. 16, 11. Once again serving George at 16 to 11. 16 to 11. Seventeen, 11. Eighteen, 18 11. The way the score moves, we have every reason to think that there will be a third game for both Yadav and George. But that the sting is not there in the action of Yadav. Service over. 12, 18. Service over. 19, 12. 19. At 19, George is there fighting against Yadav. Both the Indian lads, they look to be promising. And George is from Kochi in Kerala, which is no less a stronger basin 20, in Indian badminton. game point. 12. And he's been trained in the Podukone Academy of Badminton. George holds a greater amount of promise. Game. So that is the end of Second this game won by second game. Kiran George, 21, That 12. was the One game equalizer, all. and George and
Yadav, they stand at the same footing. One game to each other, and this is the third game that is going to be the deciding match, that the deciding game, and that will help the winner to get a berth in the finals. So as we were expecting that there would be a third game, because the way they had a slow and a very dull beginning, and the momentum was there in the second game, and maybe Yadav had in mind that he would go for the third game to prove his prowess and get a good amount of practice for the next stage, finally, if he is lucky enough to get into the finals. Yes, that was quite a dominant display from Kiran George. He really flexed his muscles there, wanting to prove everyone how good he is. As you mentioned, he's from Kerala, trains in Padukone Academy. First one was 1921, the second one 2112. That was fantastic. 20 seconds. 20 seconds. So Kiran George put to test, and he has come out trumps. 1-all. Who will win the third game Final game. in this tantalizingly close contest? Love all. Play. Semi-final, Odisha Open 2022. Four. Back live and One. starts Love. off fresh, and what a bludgeoning strike there. Play. Thunderous blow straight away from Looks Kiran fine. George, Yeah, but stamping his you authority can play. I'll have a look, but it looks fine. So and letting I cannot check Ansel now. Yadav It know looks that fine. he's we have to in the play. contest. I'm looking in the rally. See if it's wobbling. We will change. Okay. And the service judge Jilani Basha from India, and the chair umpire Fabio Beto from Italy. 2. Love. That was quite wide. Kiran again. Depth touch and trying to be slightly cheeky there. Ansel Yadav, after the first set, looks like he's a little bit fatigued out there. Not being able to move freely. 3. Brilliant cross Love. court again. That dip at the very last moment, that snap of the wrist. Kiran George is doing a fine job. Another 4. Love. outside. And what a momentum shift it has been. The man who was dominating the first set is trying to survive now. जी हाँ, और इससे पता चलता है कि किरण It's over. जॉर्ज का 1-4. क्या शानदार प्रदर्शन रहा है। हालांकि यहाँ पर अंशुल यादव को एक अंक मिला ज़रूर है, लेकिन पहले गेम में सिर्फ 2 अंक से हारे थे किरण जॉर्ज। उसके बाद दूसरे गेम को 21-12 से अपने नाम किया था। ये तीसरा गेम चल रहा है इस समय, और शानदार तरीके से एक बेहतरीन स्मैश, एक और 5-1. पॉइंट किरण जॉर्ज के नाम, और सर्विस अपने पास रखते हुए किरण जॉर्ज बेहतरीन प्रदर्शन इस मुकाबले में। ओडिशा ओपन 2022 का ये पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में चल रहा है, जहाँ पर किरण जॉर्ज की शानदार प्रदर्शन रही है। लेकिन यहाँ पर छलांग लगाकर पहुँचने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन स्लिप करके नीचे गिर गए, और अंसल यादव को एक और अंक मिला है। इसके बाद 2 और मुकाबले आने वाले हैं। एक है महिला डबल्स का सेमीफाइनल, जहाँ पुलेला गोपीचंद की बेटी गायत्री गोपीचंद एक्शन में होंगी, और उसके बाद मेंस डबल्स में श्रीलंकाई जोड़ी और मलेशियाई जोड़ी के बीच एक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले नजरें इस मुकाबले के ऊपर, जहां किरण जॉर्ज और अंसल यादव, 2 भारतीय शटलर, एक दूसरे के खिलाफ
शिरकत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं यहाँ पर, और ये मुकाबला आखिरी गेम तक, निर्णायक गेम तक गया है। लंबी रैली चलती हुई, किरण जॉर्ज अपने शॉट्स में काफ़ी ताकत झोंक रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अंसल यादव दूसरी तरफ, कभी कभार उनका रिटर्न काफ़ी आसान रहा है। लंबी रैली को फिनिश किया यहाँ पर अंसल यादव ने। किरण जॉर्ज का रिटर्न सही नहीं हो पाया। एक बार फिर से एक्शन रिप्ले में देखेंगे ज़रूर। देखिए किस तरह से किरण जॉर्ज हल्के में ले लिए, अंत तक देखते रह गए और ये अंक मिला अंसल यादव को। फासला घटता हुआ इस समय, 2 अंक का फासला इस निर्णायक गेम में। 3-5. दर्शकों की अनुपस्थिति जिस वजह से कहीं ना कहीं जितना ताकत, जितना ऊर्जा रह सकता है खिलाड़ियों में, वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। आज के सेमीफाइनल के मुकाबले, फिर कल फाइनल होने वाले हैं। पहली बार उड़ीसा में इतना बड़ा प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन के लिहाज से, और ये मुकाबले कटक में खेले जा रहे हैं। आज से करीब 1 महीने पहले पैरा बैडमिंटन के मैचेस खेले गए थे उड़ीसा में। वहाँ पर भी काफ़ी बड़े खिलाड़ी जो कि ओलंपिक्स में शिरकत किए, पैरालंपिक्स में, जैसे प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, वो खेल रहे थे। वहीं आज यहाँ पर ओडिशा ओपन में जो युवा भारतीय खिलाड़ी हैं, जो उभरते हुए शटलर्स हैं, उनका प्रदर्शन हम देख रहे हैं। इसी बीच एक और अंक किरण जॉर्ज के पक्ष में। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं स्लो मोशन में, जहां नेट पर मार बैठे अंसल यादव, जिस वजह से इस गेम में 7वां अंक किरण जॉर्ज के पक्ष में। केरला के किरण जॉर्ज, उनके पास अनुभव है। आप देख सकते हैं इस मुकाबले में फैबियो बेटो, जो इटली से आए हुए चेयर एम्पायर हैं, वहीं सर्विस जज भारत के बादशाह। छोटा सा विराम, दोनों खिलाड़ी, जब दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट आपको नहीं सुनने को मिलती है, तब कहीं ना कहीं थोड़े शोल्डर्स ड्रॉप ज़रूर होते हैं, कंधे झुकते ज़रूर हैं खिलाड़ियों की। लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण सेहत के दृष्टिकोण से ये जो स्टेप है ये लेना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा ओडिशा सरकार को, और ये एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में, एक सिक्योर्ड वातावरण में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से अंसल यादव को मिला ये पॉइंट। इस समय 7-4 का फासला। तो दर्शक हालांकि यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, मुकाबले नहीं देख पा रहे हैं स्टेडियम में, लेकिन घर बैठे अपने ड्राइंग रूम में आप इन मुकाबलों का लुत्फ उठा सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से। ये ऑनलाइन में प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल में भी आप इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इसी बीच एक और पॉइंट अंसल यादव के पक्ष में। धीरे धीरे इस मुकाबले में, इस गेम में वापसी करते हुए अंसल यादव, अब फासला सिर्फ 1 अंक का रह गया है। दबाकर स्मैश लगाने की कोशिश थी, इस बार फेक किया, चेक किया, रिस्ट को अंतिम समय में कलाइयों को मोड़ा, लेकिन फिर भी अंक नहीं मिला। जी हाँ, यहाँ पर पॉइंट मिलता हुआ किरण जॉर्ज को। बेहतरीन प्लेसमेंट शटल की। ये रीप्ले में आप देख सकते हैं बखूबी अपने कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग, जिस वजह से छकाया अपने विपक्षी खिलाड़ी को, और फासला थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ। अब 2 अंकों का बढ़त किरण जॉर्ज के पक्ष में। शोभन, Quite a good play there. Brilliant use of the wrist. Very last moment, just rotating it. Another thumping blow, but then again, that has been his problem. 7, Not 8. been able to control his smashes. Quick. Has made that umpire pretty busy there.
Your greatest strength can be your greatest weakness. That's what 7-8. George must be feeling. Has not been able to control in this match. 8-all. Solid blow there from Anshul Yadav. That was the equalizer. And as you mentioned, quietly he's moved to 8 without anybody's notice. Oh well, brilliant stroke play there from Service Kiran over, George. 9-8. He made a point out of it. 9-8. Neck and neck contest here. Outskill Service there. over. Anshul 9 Yadav was all. too fast for Energy. Kiran George and was caught off guard. Yes, he was down, but then didn't have any strength to have that pickup shot. 9-all. Good blow. Well, that's another thumping blow. Service over. Another point for 10, Kiran George. 9. He's doing a great job. 10-9. Yes, he's feeling the pressure, but he's feigning ignorance there. Well, 2 consecutive points for Change Kiran ends. George. Now on ascendancy. 11-9. He is looking to wrap it up. Kiran George leads 11-9 here at the semi-final at Odisha Open 2022 at Cuttack. This broadcast is live on DD Sports, and you can also watch it on YouTube. We have a game in our hands. 20 seconds. 20 seconds. Both the players must be feeling the pressure of the semi-finals. Thank you, players. But it's all about controlling it and not letting your emotions get the better of your skills. So hide your emotions and play the game. 11-9. Play. Kiran to serve. Good retrieve and Service over. Anshul this time 10, coming back. 11. 11-10. Kiran George made a huge mistake of lunging forward and trying to lift it. These two are putting a fabulous contest. Ah, well, I'm not sure Service whether over. that is inside 12, the baseline. 10. No, even though George celebrated, had a fist pump. Oh well, he has. That was inside, just touching the line. 12-10. Well, he's giving a lot of chances. Anshul Yadav, you cannot do that. You're playing at this 30. level and you're giving 10. a lot of opportunity to Kiran George to wait and then smoke it. No response whatsoever. You cannot. It's very hard to give a return when it is coming at this page, this pace. It must be rapid, around 330 kph. Service over. 11-30. Good comeback from Anshul Yadav. Had that urgency to put the shuttle over the net. Playing around that center line.
Well, good net play, and then Kiran George is able to outskill his opponent Service over. via 40, some 11. faint touches. The very last moment had that net kill. He's buying a lot of time here, Kiran George, and he is the victor once more. 15-11. 11. Just maintaining his dominancy in this game. He's not letting Ansal Yadav go off the hook. Constant pressure, bombarding those smashes, and then again some deft touches. 16-11. This is classy from Kiran George. Change, squeezed. 3 straight points for him. He's looking ominous out there. He's playing like a Shrehensa. दूसरे गेम में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए Service किरण over, जॉर्ज, हालांकि 12, यहाँ पर अंसल यादव 16. को एक पॉइंट मिला है जिस वजह से वो पहुंचे हैं 13 पर। 13-16 का स्कोर लाइन, 12-16 का स्कोर लाइन, माफ कीजिएगा। और किरण जॉर्ज जो कि उनके सामने है, उन्होंने पहला गेम हारा था, लेकिन उसके बाद दूसरे गेम में एक शानदार वापसी देखने को मिली और दूसरे गेम को 9 अंकों से जीतने के बाद तीसरे गेम में अभी तक अच्छे चल रहे थे, लेकिन 13, लगातार 2 अंक 16. गंवाया है। और ये जो फासला है, जो बढ़त है, जो उनके पक्ष में अभी भी है, लेकिन वो घटता हुआ अब 3 अंकों पर पहुंचा है। 16-13 से किरण जॉर्ज आगे। एक छोटा सा विराम लेते हुए उसके बाद हम देखेंगे अंसल यादव सर्व करने के लिए आएंगे। ये कठिनाई काफ़ी होती है खिलाड़ियों को जब मुकाबले 13, तीसरे गेम 16. तक, निर्णायक गेम तक जाता है, तो खिलाड़ी अपने आप को संभलने के लिए भी कभी कभार छोटे छोटे ब्रेक्स लेते ज़रूर हैं। यहाँ पर अंसल यादव बाएं हाथ के खिलाड़ी, स्मैश उनकी दिशाहीन Service over, स्मैश 17, बाहर गई, 30. जिस वजह से पॉइंट यहाँ पर किरण जॉर्ज को मिला है। बेहतरीन प्रदर्शन इस मुकाबले में। ये पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल मुकाबला है जो कि आप सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स में देख रहे हैं। ये है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से किरण जॉर्ज का बेहतरीन स्मैश, वहाँ पर छलांग लगाते हुए 18, स्मैश लगाया। आप 30. एक्शन रिप्ले में एक बार फिर से देख सकते हैं किस तरह से पूरे कंट्रोल में थे। उन्हें पता था कि रफ्तार भरा स्मैश वो कर सकते हैं, उनके पास वो मौका था, मौके को ज़ाया नहीं किया और आसानी से अपने लिए एक अंक बटोरा। यहाँ पर एक अनफोर्स्ड एरर अंसल 19, यादव के द्वारा, 30. जिस वजह से अंक अब पहुंचा है 19-13 पर। और लगातार स्मैशेस इस बार बाहर मार बैठे और ये है 20, मैच पॉइंट। मैच देखिए आप पॉइंट, किस तरह से 30. बेहतरीन तरीके से 20 तक पहुंचे हैं किरण जॉर्ज। पहला गेम हारे थे, लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे गेम में उनका over, शानदार प्रदर्शन 40, देखने को मिला है। 20. यहाँ पर हालांकि एक पॉइंट मिला है अंसल यादव को, लेकिन यहाँ से 6 और मैच पॉइंट्स बचाना आसान नहीं रहेगा अंसल यादव के लिए। बढ़िया नेट प्ले दोनों के द्वारा, यहाँ मौका दिया है स्मैश करने का और उसमें सफल। इसके साथ ही 21-14 से डिसाइडर यानी कि निर्णायक गेम को अपने नाम किया है किरण जॉर्ज ने। बेहतरीन तरीके से Match अपने won by हमवतन Kiran खिलाड़ी, George, अपने साथी 19-21, खिलाड़ी, भारत के ही 21-12, खिलाड़ी अंसल यादव को 21-14. किरण जॉर्ज ने 19-21, 21-12 और 21-14 से जीतकर फाइनल के लिए टिकट हासिल कर दिया है। केरला के किरण जॉर्ज भारत के दूसरे खिलाड़ी अंसल यादव को हराया है यहाँ पर इस मुकाबले में। और ये देख सकते हैं विनिंग मोमेंट, किस तरह से इस मुकाबले में जीत हासिल किया किरण जॉर्ज ने। पहले एक स्मैश लगाया, प्लेस किया और उसके बाद रिटर्न सही नहीं हो पाया, जिस वजह से आसानी के साथ तीसरे गेम को 21-14 से अपने नाम किया किरण जॉर्ज ने और फाइनल के लिए रास्ता बना लिए हैं। वो खेलेंगे फाइनल में भारत के ही प्रियांशु रजावत के खिलाफ। तो जो फाइनल मुकाबला है वो कल खेला जाएगा पुरुष सिंगल्स का, जहां पर भारत के ही प्रियांशु रजावत सामने होंगे
किरण जॉर्ज जो अभी अभी अंशल यादव को 19-21, 21-12 और 21-14 से हराया है। Brilliant win from Kiran George. Just letting know everyone that his presence should be felt, and we all did. Fantastic performance, 19-21, 21-12 and 21-14. He wraps things up and goes to play the final against Rajawat tomorrow here at Odisha Open 2022. The next match, women's double semi-finals. Jolly with Gayatri will face Arubala and Valuvan. Match on court 1, women's doubles. Treza Jolly and Gayatri Gopichand Pulela, India versus Arulwala Radhakrishnan and Nina Valuvan, India. Umpire Ravi Dixit, India. Service judge Shailesh Kulkarni, India. This is red and this is black. Who will call? Call first. Red. Red is called. Red, you want to toss? Service. Who will serve? Ella will serve. यह है महिला डबल्स सेमीफाइनल मुकाबला और फिर से 4 भारतीय शटलर्स हमारे सामने कोर्ट पर अपना जौहर दिखाएंगे और उनमें से एक है बैडमिंटन के लेजेंड पुलेला गोपीचंद की बेटी गायत्री गोपीचंद और उनके साथ उनके जोड़ीदार त्रिशा जॉली जो कि यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है अरुल बाला राधाकृष्णन और नीला वलुवन जो कि चारों खिलाड़ी यहाँ पर भारतीय हैं। अंपायर भी भारत से रवि दीक्षित और सर्विस जज शैलेश कुलकर्णी। तो हम नजर डालने वाले हैं इन चारों खिलाड़ियों के ऊपर। नीले पोशाकों में है अरुल बाला राधाकृष्णन और नीला वलुवन। वहीं दूसरी तरफ है गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा जॉली। तो एक रोचक बात यह है कि अभी हाल ही में समाप्त हुए सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो लखनऊ में खेला गया था सुपर 300, वहां ट्रिशा जॉली के साथ मिलकर गायत्री गोपीचंद रनर्स अप बने थे और हालांकि फाइनल मुकाबला वो हार गई थी मलेशिया के अन्ना चेओंग और त्यू मेई जिंग के खिलाफ, लेकिन यही जोड़ी सैयद मोदी इंटरनेशनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल का सफर तय किए थे। और यहाँ पर फिर से वही जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की हमारे सामने
जहां तक गायत्री गोपीचंद का सवाल है, 18 वर्षीय खिलाड़ी काठमांडू में जो साउथ एशियन गेम्स था जहां भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था, उसमें वो शामिल हुए थे। वहीं महिला सिंगल्स में उनको सिल्वर पदक, उन्हें रजत पदक मिला था क्योंकि वो हार गई थी फाइनल और उनके खिलाफ थी अश्मिता चलिया, जो कि कुछ समय पहले यहाँ पर महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल खेल रही थी और वो हार भी गई स्मित तोष्णीवाल के खिलाफ। लेकिन अब समय है नजर डालने का गायत्री गोपीचंद पुलेला और त्रिशा जॉली, जो एक ये बड़ा मुकाबला इसलिए यहाँ पर जैसे नाम है पुलेला गोपीचंद का, जो कि भारत के लिए इतना बड़ा नाम है। जहाँ तक बैडमिंटन का सवाल है, काफ़ी खिलाड़ी के हिसाब से, कोच के हिसाब से बैडमिंटन के लिए भारत के लिए बहुत नाम कमाई है। तो गायत्री गोपीचंद आज उनकी बेटी यहाँ पर खेलती हुई, अभी तक उनका भी प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा है। सैयद मोदी इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन किए थे, तो यहाँ पर उनके ऊपर नजरें रहेंगी, लेकिन उतना दबाव उनके ऊपर भी नहीं रहेगा। दबाव सारे खिलाड़ियों के ऊपर रहेगा क्योंकि त्रिशा जॉली वो भी सैयद मोदी में अच्छा प्रदर्शन करते आई हैं। उसके अलावा अरुल बाला राधाकृष्णन और नीला, उनके ऊपर दबाव रहेगा, उनके ऊपर प्रदर्शन का दबाव निश्चित रूप से रहेगा। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में शोभन गडनायक, कितना महत्वपूर्ण होगा ये मुकाबला, क्योंकि महिला डबल्स में एक सेमीफाइनल अभी खत्म हो चुका है, उसमें भी हम भारतीय खिलाड़ियों को देख रहे थे। से 4 भारतीय खिलाड़ी आपके सामने और ये बड़ा मंच है। चेयर अंपायर है, वो भी भारत से हैं। वहीं शैलेश कुलकर्णी सर्विस जज है। मुकाबला शुरू होने के कगार पर। शोभन, huge contest on the cards. As you mentioned, the enormity of the event. Who holds their nerve? That's what matters at this stage. The first point. Service over. For one. Jolly and Pulela. Quite a good combo. One who likes to dominate and other likes to play that anchor sheet role. Two points. Good start from Jolly and Pulela. Pressure will be on Radhakrishnan and Valuvan. Yes, they are facing service fall call too high. The might of Tressa Jolly and Gayatri Gopichand, as you mentioned, second inside the Modi International Tournament, which was held in Lucknow. So they have the form in their hand. Another stunning reply from Gopichand. 3-1. Yes, he was ready for it. Daughter of legendary coach Pulela Gopichand. Again, no time. They have raced to 4-1. What a brisk start it has been. Again, little ambitious there. Service over. Especially Jolly not being able to control the shot, giving away an easy point there for Arul and Valuvan. They need to stay in the contest. Too high. Cannot give it away. Cannot throw in the white towel so early in the piece. 5-2. Yes, they're playing some experienced players in front of them. Well, outside those tram lines. Service over. 3-5. They're also giving some chances, Jolly Gayatri. They're not that much clinical so far. Slightly topsy-turvy ride for them. Well, lovely stroke there from Jolly, and the retrieve is not good enough.
For a moment, I thought they'll be able to, but then trying to roll the wrist, it's not happening. Well, just the dominant display of Gayatri Gopichan there. 7-3. Just the class of the girl. Just showing through. Importantly, she is holding her fort. Well, trying to play a chip shot. Not 8, going all right. 3. Still, they will get a point. Jolly Gayatri. One slightly shorter. Play. Pulela. And the front, and then on the back, Jolly. Service over. Good play there from Arul 4, and Valuvan. 8. Just staying relevant in this game. Yes, Gayatri Gopichan is the cynosure of all eyes. They should also believe that they belong to this stage. They fought their way through to the semi-finals. It has been all merit. Good fight back. 5. 8-5. Jolly and Gayatri leading. But it's close, even though the scorecard might reflect that Jolly and Gayatri have dominated. Again, caught her off guard Service there. over. He was not ready, 9, Valuvan. 5. And they are on the attack straight away, on the ascendancy, Jolly and Gayatri. Just get a feeling they're in a hurry. Another solid smash. Well, wow. That is awesome 10, from Jolly. 5. It was in the air, and then at the very last moment, that snap of the wrist. 10-5. Service over. 6, 10. 10-6. Another Service mistake, over. another point 11, for 6, Jolly and interval. Gayatri. They move to 11 in the mid-interval. They are dominating 11. While Arul and Valuvan, they have not hit the ground running. They're on 6. Seconds. 20 seconds. Eleven, 6. Play. Gayatri to serve. Well, she is picking her spots. 12. There's Jolly and 6. Gayatri, and they are putting on a show here. 12 already in no time. Good reply there Service from over. 7, Arul. 12. Arul Bala Radhakrishnan and Neela Valuvan. Pair of promise. Another smash with Service a over. lot of gravity. 13, 7. Moves to 13. Valuvan was nowhere near it. She didn't expect the shuttle to come at that rate.
Well, another off stroke there, 14, taking that 7. offensive route, but then not being able to get a point. 14 from 7. This is getting easier for Jolly and Gayatri. Kids for candy. 15, Another 7. strike, not being able to force the play, losing out on another point. 15 from 7. A chip. Well, good solid strike. Good depth touch and a lot of 16, finesse. 7. Jolly Gayatri moved to 16. देख सकते हैं आप किस तरह से गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की ये जोड़ी इस मुकाबले में हावी हो रही है, आगे चल रही है। यहाँ पर हालांकि सर्विस में गलती जिस वजह से एक अंक मिला है राधा कृष्णन और वलुवन को, लेकिन 8 अंकों का फासला, 8 अंकों के बढ़त उसको 9 कर दीजिए अब, क्योंकि 17वां अंक यहाँ पर 17, जॉली और गायत्री ने हासिल किया है। पता चलता है कि किस वजह से वो इस समय जितने भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो उभरती हुई भारतीय महिला जोड़ी है उसमें अव्वल दर्जे तक पहुंचे हैं ये दोनों खिलाड़ी। उसका वजह ये है, उसका कारण ये है, दोनों के पास स्किल्स हैं। और ये देखिए फिर से उसका नमूना दिखाते हुए छलांग लगाकर बेहतरीन स्मैश, उसका एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं, क्रॉस कोर्ट, और पूरी तरह से गलत फुटिंग में पाया वलुवन को और अंक हासिल करने में सफल हुई। 10 अंकों की बढ़त, ये बहुत बड़ी बढ़त है। यहाँ पर उसको 11 कर दीजिए। माफ़ी मांगती हुई वहाँ पर पहले अंक हासिल किए, उसके बाद माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये बिल्कुल शरीर पर था। 19-8 से आगे गलत है, ये अनफोर्स्ड एरर है। यहाँ पर पॉइंट तो मिल जाएगा। गेम पॉइंट तक पहुँच गए हैं। बेहतरीन तरीके से पूरी तरह से हावी हुई है यहाँ पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। बढ़िया ड्रॉप शॉट। यहाँ पर बाहर मार बैठी त्रिशा जॉली, जिस वजह से पॉइंट मिला है अरुल और वलुवन को, लेकिन अभी भी 11 गेम पॉइंट्स बचाने पड़ेंगे। आसान नहीं है किसी भी जोड़ी के लिए। और इसके साथ ही ये गेम अपने नाम करते हुए बेहतरीन तरीके से फिनिश किया, और ये पहले गेम को एक तरफा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरी तरह से हावी होती हुई त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने 21-9 से भारत के ही अरुल बाला राधाकृष्णन और नीला वल्लुवन को हराया है। तो पहला गेम जॉली और गायत्री के नाम, दूसरा गेम भी रोचक हो सकता है। क्या दूसरे गेम में वापसी कर पाएंगे अरुल बाला राधाकृष्णन और नीला वल्लुवन, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये मुकाबला पूरी तरह से गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली के नाम रहा है। इसके बाद आज के दिन सिर्फ एक ही मुकाबला बाकी रहेगा, जो कि श्रीलंका के सचिन डायस और बुवेंका गुनतिलका, वो आमने सामने होंगे नूर मोहम्मद अजुन अयूब अर्जियन, मलेशिया के उनके जोड़ीदार लिम किम वा के साथ। वो होगा आज के दिन का अंतिम मुकाबला। लेकिन उससे पहले नजरें इस मुकाबले के ऊपर। हालांकि पहला गेम एक तरफा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे गेम में वापसी नहीं कर पाएंगी अरुल बाला राधाकृष्णन और नीला वल्लुवन। वापसी की पूरी गुंजाइश है, मजा आने वाला है। नजरें बनाए रखिए इस मुकाबले के ऊपर। दूसरा गेम अब से थोड़ी देर बाद शुरू होता हुआ। They have got a foot on that final. Just need to maintain this dominance over Arul and Valuvan. Second game, love all. Jolly and Gayatri have been class apart in the first one. Well, that was Service a over. rare miss One. from Gayatri. Love. She has been quite sublime so far.
A lot of conviction in her shots. Straight away they're back into Service it. over. 1-1. 1-1. Jolly and Gayatri maintaining the pressure. They're attacking in front of Arul and Valuvan. They've not been able to counter-attack. That has been the problem. Just a lot of finesse and class there. Again from Jolly. These are some serious gameplay and skills on offer here at Odisha Open 2022 Super 100. 3-1. Just look at that. Wonderful use of the wrist from Gayatri. Well, finally some respite for Service Arul and over. Valuvan. 2-3. Just outside that tram line. They will serve. Fault. Service fault call. Too high. Service Service fault. It over. was too high. 4. Not good enough. 2. Another point for Jolly and Gayatri. Nothing going right for Arul and Valuvan. Interesting shot there. So he was trying to manufacture a 5, shot. It was 2. not intended. Just giving it away. Another point. Well, you cannot 6. give her so much 2. of air. And then went for that net kill. One. Good display of backhand and forehand 7. from Gayatri. Looking picture perfect. Another magnificent shot. 8. Excellent use of the depth of the court. And bagging another point. Now it's getting 9, easier and easier for 2. Jolly and Gayatri. Some rudimentary stuff there. Well, a rare miss Service over. from 3. Gayatri. Maybe 9. just got too excited to go for that smash. Just took her eye off that shuttlecock. Service over. 10. Another miss. 10-3. It's all happening out here for Jolly and Gayatri. They're almost through to the finals. Service over. 4. Dare I say almost. Arul and Valuvan have a point. Ah, tremendous Service shot there. over. Again, 11. 4. another unforced error Interval. from Arun and Valuvan. Just gifting away points. Jolly and Gayatri move to 11. They are dominating. Seconds. 20 seconds.
11-4 से आगे चल रही हैं ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। शानदार 11, प्रदर्शन देखने को मिला है इस मुकाबले में। पूरी तरह से हावी हुई हैं ये दोनों खिलाड़ी। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, अब से थोड़े ही दिन पहले जो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी वो फाइनल तक का सफर तय की थी। इस बार उनकी कोशिश ये रहेगी कि फाइनल में ना केवल वो प्रवेश करे बल्कि फाइनल जीते भी, जो कि कल खेला जाएगा। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन किए हैं अभी तक वो जल्दबाजी नहीं कही जाएगी। लेकिन यहाँ पर वापसी की घंटी बेहतरीन तरीके से स्मैश लगाते हुए यहाँ पर अरुल और वल्लवन ने एक अंक अपने नाम किया है। 7 अंकों से पिछड़ रही हैं दूसरी गेम में। पहला गेम भी गायत्री और ट्रिशा के नाम रही है, तो इससे पता चलता है कि फाइनल में एक कदम रख चुकी हैं गायत्री और ट्रिशा। क्या दूसरी कदम भी रख पाएंगी? इसी गेम में क्या समाप्त कर पाएंगे? लग तो वैसे रहा है, क्योंकि 13वीं अंक यहाँ पर हासिल कर लिए। देखिए किस तरह से बिल्कुल रूम नहीं दिया, रिटर्न नहीं कर पाई वहां पर वल्लवन और बाहर मार बैठी, जिस वजह से 13-5 से गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली आगे। एक बार फिर से बेहतरीन फिनिश, क्या बात है। बिल्कुल दोनों खिलाड़ियों के बीच में शटल को प्लेस किया, कोई मौका नहीं था किसी के लिए भी, ना फोरहैंड में जा सकती थी ना उनकी जोड़ीदार बैकहैंड में जा सकती थी। और इसी हिसाब से एक और अंक गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली के पक्ष में। कोर्ट के चारों तरफ दौड़ा रहे हैं और फिर फिनिश भी उतनी ही बेहतरीन। एक बार फिर से क्रॉस कोर्ट के लिए गई, प्लेसमेंट काफी बढ़िया, कोई मौका नहीं रिटर्न करने का। 15वां अंक अपने नाम किया है यहाँ पर जॉली और गायत्री ने। शायद बाहर, जी हाँ, अनफोर्स्ड एरर्स भी हो रहे हैं, फोर्सिबली भी गलतियां कर रहे हैं, जिस वजह से पूरी तरह से इस मुकाबले में पिछड़ रही हैं इस समय वल्लवन और अरुल बाला राधाकृष्णन। 16-5 से ये जो दूसरा सेमीफाइनल है महिला डबल्स का, उस वहां पर गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली आगे चल रही हैं। यहाँ पर क्या शानदार रिटर्न, बिल्कुल उनके मुंह के सामने था और उसमें भी सफल नहीं हो पाई। 17वां अंक यहाँ पर, ये फासला बहुत बढ़ गया है और यहाँ से करीब करीब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रही है। यहाँ से वापसी करना एक कहानी के तौर पर रहेगी जरूर, लेकिन अनफोर्स्ड एरर यहाँ पर गायत्री की जॉली की, जिस वजह से एक पॉइंट अरुल और वल्लवन को मिला जरूर है, लेकिन अभी भी 11 अंकों से पीछे चल रहे हैं। ऑल इंडियन सेमीफाइनल यहाँ पर अनफोर्स्ड एरर, 18-6 से आगे। 18-6 ओडिशा ओपन 2022, 25 जनवरी से ये मुकाबले यहाँ पर शुरू हुए हैं। आज सेमीफाइनल के मैचेस चल रहे हैं, कल है आखिरी दिन, कल फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। और कल शायद त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद फिर से हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आज प्रदर्शन किया है, देखने वाली बात है कि कल कैसा प्रदर्शन कर पा रही है, क्योंकि शायद इस मुकाबले में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब 19-6 से आगे जॉली और गायत्री की जोड़ी। बेहतरीन रिस्ट वर्क, कलाइयों का बेहतरीन उपयोग, उन्हें पता है प्लेस कैसे किया जाता है, उन्हें पता है स्मैश कैसे किया जाता है। दिस इज गेटिंग वेरी इजी। बहुत आसानी से एक अंक हासिल करते हुए मैच पॉइंट तक पहुंचे हैं और बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फासला है। 20-6 से गायत्री और त्रिशा आगे और इस मुकाबले को समाप्त कर लिए हैं यहाँ पर। पहले गेम को 21-9, दूसरे गेम को 21-6 से जीतते हुए फाइनल में प्रवेश किए हैं भारत के गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली, और भारत के ही अरुल बाला राधाकृष्णन और नीला वल्लवन को हराया है ये जोड़ी ने। क्या बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला दोनों के द्वारा। दोनों पूरी तरह से हावी हुए इस मुकाबले में और उनका जो स्माइल है वो बयान कर रही है कि किस तरह से इस मुकाबले का कहानी रहा। इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी होते हुए अपने साथियों, जो भारत के ही खिलाड़ी है, भारत के प्रतिद्वंदी है, उन्हें हराया है और इसके साथ ही इस मुकाबले में जीतते हुए फाइनल में शामिल हुए हैं।
फाइनल कल खेला जाएगा और उनके सामने एक और भारतीय जोड़ी रहेगी, संयुक्ता घोरपड़े और श्रुति मिश्रा की, जो कि कल फाइनल मुकाबले में शिरकत करने वाली हैं। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं जॉली और गायत्री ने इस मुकाबले को सिंगल हैंडेडली एक तरफ 21-9 और 21-6 से भारत के अरुल बाला और वल्लुवन को हराया है। इसके बाद खेला जाएगा आखिरी मुकाबला, आज के दिन का आखिरी सेमीफाइनल इस ओडिशा ओपन 2022 का, और वहां दो अंतर्राष्ट्रीय देशों को देखने को मिलेगा। श्रीलंका से सचिन और बुवेन का, सचिन डायस जो कि पहले भी एक मुकाबला खेल रहे थे मिक्स डबल्स में, वो मेंस डबल सेमीफाइनल में शिरकत करेंगे और उनके सामने मलेशियाई जोड़ी मोहम्मद अर्जिन अयूब अर्जियन और लिम किम। तो ये एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, इंटरनेशनल फ्लेवर देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद ये मेंस डबल सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। Men's double, Sachin Diaz and Bhuvanika Gunitilke, Sri Lanka versus Noor Muhammad Azrin Ayub Azrin and Lim Kim Wang, Malaysia. Umpire Hermin Armin Meher, Iran. Service judge Fabio Vetto, Italy. Yes, huge game on the card. Sachin Dias from Sri Lanka, who won, who was in action and won his first match, and then he will be with Buenica from Sri Lanka, and they will face Noor Muhammad Azrian Ayub Azreen from Malaysia and Lim Kim Wah. So both the umpires, the chair umpire Hermin Armin Meher and the service umpire Fabio Petto from Italy. Black, you won the toss. Sir? Okay. Well, how much is sir? So it's an international contest between Sri Lanka and Malaysia. A lot will ride on both the pairs. Will they be able to carry the fortunes of their country and come out victorious? The umpire, Hermin Armin Merf. See, he's all set. So he's the chair umpire. This is the men's double semi-final of Odisha Open 2022. The tournament started on January 25th and the final will be played tomorrow on 30th. So this is the penultimate day. We are bringing all the live pictures from JNIS, Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Cuttack. It's
Going to be another crackerjack of a contest. With these two outstanding teams locking horns. A lot of skills on offer. A lot of learnings for the Indians as well, who must be glued to their television. So this game is live on DD Sports. You can watch it on YouTube as well. But we saw how dominant was Sachin Diaz, what stroke play he had. So this is another Sachin Diaz 2.0. Culture of producing some magnificent badminton players. And I'm pretty sure that Azreen and Lim Kim will not let us down. Some officials there, a lot of dignitaries as well. No crowds allowed. Tournament being organized under. There's quite a buzz as well. The background. This is a semi-final clash. So a lot of referees. They are in position and online. So all in readiness. We are ready to begin. Get ready. Just a call from chair umpire and we will proceed. Okay. Ladies and gentlemen, on my right, Bhuvanika Gunetalika and Sachin Das, Sri Lanka. And on my left, Lim Khimkha and Nur Muhammad Azharuddin Ayub Azharuddin, Malaysia. Nur Muhammad Azharuddin Ayub Azharuddin to the right to side of the serve chair to umpire and to the left, Bhuvanika Diaz and Gunetalika. No ball. Play. Well, what stroke play straight away. Some One fearsome smash there. Not been able to control Sachin Diaz. In action for the second time today. Another thunderous blow straight onto that net. Couple of points for Azreen and Lim Kim. Have not broken a sweat. And still 2 points on the board. That's the third one. 3 love. Ongoing is the first game in the second mixed doubles semi-final. And this being the last match of the penultimate day of the Odisha Open 2022. This holds special significance because we find two teams outside India. They are pitted against each other, Sri Lanka and Malaysia. Call. Service over. 4-1. Malaysian duo. Serving at 4-1. Service over. 2-4. Sachin Diaz and Gunetalika, Sri Lanka. Service over. 5-2. In the ochre-colored jersey, Sachin Diaz and Gunetalika. Sachin Diaz has been the most promising player from the Sri Lanka. Oh, smash and counter-smash, and written wasn't that way. Malaysia has a long tradition of playing badminton for a pretty long time.
Great smash that Service came over. from very aggressive 6-3. shot rather. Play. Malaysians Nur Muhammad Ajin and Kinwa. Service over. 4-6. If you look at their track record, they seem to be quite promising and they have an advantage over the Sri Lankan duo. But Sachin Des, 5-6. one of the most promising players of Sri Lanka, his presence cannot be ruled out. And the amount of pressure that he exudes on the court, that cannot be underestimated. Great smash and very aptly returned that from Malaysia. Mostly playing aggressive, that was Sri Lanka. 6-all. At 6-all, that is how they stand in the first game of this match in the category of mixed doubles. Service over. 7-6. 10. Kimwa to take on. 8-6. Service over. The 7. return from Kimwa was not that accurate, so they had to concede 1 point to Sri Lanka duo. Greater power, and that's Service sort of over. Nur Muhammad 9-7. Ajin. Quick one. 9-7. That is how they stand now. They're ready. Do it with your t-shirt. They're ready. And the previous match that was played between the Indians, all Indian teams, that was wonderful, but it was lopsided in a way. But this seems to be Over. all tit 9. for tat, a nail to nail fight is going on. Oh, beautiful, that was a great punch. 10-8. Obviously, the Sri Lankan duo had no coordination to make a good return, in fact. Service over. 9-10. Nur Muhammad Ajin and Kim Wa, the way they are exerting pressure on the Sri Lankan duo, that could spell lethal for the Sri Lankans. But both the Sri Lankan players, with their physical height, that is helping them to play with an advantage. However, at 11-9, Malaysians are way ahead. Stay out. One interesting match between Sri Lanka and Malaysia in the 20 mixed doubles seconds. category 20 seconds. on the penultimate day of Odisha Open 2022 that began on 25th of January. Thank you. The first edition of BFW Odisha Open 11, 2022. 9. Play. Service over. 10-11.
11 all. That is how they stand now. Great return. It was a great 11 all. attempt on the part of Azeen, but the height was low and the point went in favor of the Sri Lankans, obviously. But the presence of the 12, Malaysians 11. here in adding a pressure to the Sri Lankans, that has to be watched and seen. Get ready faster. Service over. That was 12 in all. fact expected from Azeen of the correction Kim Kwa. Very aggressive stance that War had, but still then was not able Service to over. make a return. 13, 12. Oh, great the pressure, 14, 12. great the return. Play. Uh, 15, 12. Lim. what a jump, serves mass. 16, The Malaysians, 12. they have a different way of putting the shuttle across. Thirteen. Service over. To the widest possible range to put the shuttle across. Service over. 14, 17. Malaysians at 14 now. Their style of game and their understanding of the court. These are the things to be watched for.
But what I find, none of the teams, they go for any high serves. They go for all flick serves, and that is the way they try to put the shuttle across to go for 15, a greater 70. momentum in the course of the game. Yes, absolutely. Just the explosive nature of the play has been quite pleasing to the eye. Service over. 18, And 15. what fast hands. They have some great hands when it comes to the Sri Lankans and Malaysians. 19, 15. There's another point for the Malaysian duo. 19-15. On the verge of winning this game are the Sri Lankans. Will they be able to pull it off? Fantastic rally comes to an end. 20, game Via point, that 15. another powerful smash from Sachin Diaz. He was in position and in line as well. 20-15 game point for the Sri Lankans. There it is. First game Quite won nicely by done. Sachin Diaz. 21-15. Game belongs to the Sri 21-15. Lankans. Yes, At 8-4, Malaysian to serve. quick one. Back to the court. Playing to the empty stands there. The players Okay. from Sri Lanka and Malaysia, they are in action. And the court number 1 at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack, the venue of the first edition of Odisha Open 2022. Service over. 5-8. At 5-8, Sri Unfortunate. Lanka to serve. Oh, looking very aggressive and also quite lethal, the Sri Lankan players. Service over. They go for the 9-5. best of coordination and they put it in such a way that mostly they gain points after the points. 10-5.
Malaysia inching ahead, now standing at 10-5. Okay. Oh, that was a great piece of action Service over. coming from the Sri 6, Lankans 10. and going for that winning point. So they won the point and they move up to 16. Seven, 10. The Sri Lankans staying poised and confident against the Malaysians. How putting it across in such a way that the Sri Lankans, they always 10. have a clear advantage. Even though they are a bit behind the Malaysians, but still Play. then, they always have an advantage over the Malaysians. Service over. 11, 8. Interval. At 11-8, the Malaysians to serve the Sri Lankans. Now looking at the second game, we find that the second game has slowed down a bit. The momentum that we had seen in the first game is not there. Maybe they're saving up their energy for the last showdown in the third and last game of the day. Yes, 20 absolutely. I feel the seconds. same. 20 Because seconds. both the teams know that this game, this match will definitely go to the Players third on court. set. So they have to be calculative at the court. Cannot give all their energy away. They know that Malaysian side is 11, a tough side to 8. beat. Just Play. stay in the hunt. Yes, you have won the first game. You try for the second. If it doesn't happen, don't be so disappointed. Well, slightly error in judgment there. I believe that was inside the baseline. 12, 8. Apologies straight away from the Sri Lankan players. And yes, they have got, well, the decision has gone against them. 12-8. Well, super footwork and body movement. Fault. And wonderful over. smash there. Drive 9, 12. onto the body. They move to 9. They're still not losing hope. They must be thinking if they can give their 100% in the second set, that the game Thank you. won't even go to the third. 9-12. But talking about this game, the stroke play has been simply brilliant. Any youngster watching this must take a notebook and write every stroke that has been on display. And again, terrific placement and footwork. 13, 9. Amazing subtle sense there from the Malaysian players. They believe 13 and Sri Lankans are on 9. Still a healthy lead of 4. Service over. 10, 13. Slightest of mistakes from the Malaysian players, giving a point away. The Sri Lankans have been slightly on their heels in the second half. Service over. 14, 10.
not been able to capture the moments in this game. Maybe that's why trailing by 4. Service over. 11-14. Another point for the Sri Lankans. The island nation believes. Crucial juncture in this game. They're slowly and steadily. 14. Quick one. After slowing down a bit, the Sri Lankan men, they are trying to prove an advantage over the Malaysians. And the way they are moving up, they think that they have to wind up the game as soon as possible. Service over. 15. Oh, there is a 12. setback for them. It's 15-12, Malaysia serving. Service over. 13, And mostly the Sri 15. Lankans, they are going for the accurate placings instead of going for the punching shots. Pass the shot and If they can win the points in that way, that will be most easier for them. Great. Service over. The first time it was a 16, wonderful return, but the 13. second time little bit lack of coordination was there, and Malaysians had the advantage, and that is how they move up to 16. Service over. 14-16. Sachin Dayas and Gunatilaka. Sri Lankan duo. Service over. 17-14. Oh, the reach was superb, but was not able to put it across. 18-14. Okay. At 18, Malaysian serving. Service over. 15-18. Good judgment is what is necessary at the moment for the Sri Lankans now. Necessary work, okay? Oh, that Service was not over. to be. 19. Once again. 15. Malaysians men, they have an advantage now, They are waiting. You can do it with your switch. staying at 19. That must have added to their confidence. Service over. 16-19. Seventeen, 19. Once again, a setback for the Malaysians. A beautiful Service piece of over. delivery coming 20, from the Malaysians. game point, 7. Now 20. Malaysians at 20. At 2017, the Malaysians will definitely want to clinch the game to bring it as an equalizer. And the Sri Lankans
will have obvious reasons to stop them. If they are lucky enough and if they are able enough, then that could be a game changer for them. Service fault called too high. Service over. 18-20. Yeah, it's higher than. Still very hopeful the Sri Lankans are at the moment. Play. They have to be very, very careful this time. Oh, fighting for life there. Oh my God. That is the end of this game. And the Malaysians men, they have proved themselves and they have won this game. So 1-1 at the moment, the Malaysians men and the Sri Lankan men. They will have to save their energy now for the third and ultimate game so that they can reserve their berth in the finals. But a lot of excitement was among the people. The few of them are present here since this is closed for the ordinary spectators and the stands are empty. Only a few officials and team supporters are there, but still then, they were all hopeful of Sri Lankans making it in their own way, getting into the finals. But that didn't happen in that way, and obviously they will have to change their style of game. Obviously their confidence, and if they are able enough, if they are efficient enough, if they are sincere enough, if they are lucky enough rather, all the things are put together. If they have to win a match, and if that is the way it happens, then Sri Lankans will place themselves in the finals. Anyway, it's the best of the talents from Sri Lanka. And they are the front runners from Sri Lankan badminton. Of course, talking about the Malaysian side, they are not the front runners. They are the second group of the badminton players. The senior most badminton players, they have opted out for many, many reasons. COVID is one of them. But still then, anyway, they are gaining their experience and they are getting the exposure at the same time. They get to know the different international players also, their styles and the maneuvering of the games. The Sri Lankans, they are trying to exude a greater amount of pressure. Pressure mentally and also psychologically, so that the Sri Lankans, they get to win the game confidently and very correctly. But anyway, it's all neck for neck, and Malaysians will not allow the Sri Lankans to move ahead in that way so easily. So it's all 1-1 at the third game. So this is how they stand on equal footing. 1 game each and 1 point each. जी हाँ, ये तीसरा गेम, ये निर्णायक गेम पर आकर पहुंचा है ये सेमीफाइनल मुकाबला, और एक शानदार प्रतियोगिता देखने को मिल रहा है, एक अच्छा संघर्ष देखने को मिल रहा है इन खिलाड़ियों के बीच। और जैसे कि पहले गेम को 21-15 से जीत लिया था श्रीलंकाई जोड़ी ने, दूसरे गेम में मलेशियाई जोड़ी का बेहतरीन वापसी देखने को मिला और उन्होंने 21-18 से जीत हासिल की। और अब ये तीसरा गेम, और अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इन चारों खिलाड़ियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि चारों एक तरह से खेल रहे हैं और चारों अपना 100% दे रहे हैं, अपना जौहर दिखा रहे हैं। यहाँ पर 3-1 से इस समय मलेशियाई जोड़ी आगे और सर्विस उनके पक्ष में। और यहाँ पर गलती, ये बढ़त आगे बढ़ रही है मलेशिया के लिए। लिम किम और अजरीन 4-1 से आगे चल रहे हैं इस मुकाबले में। ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला है, कल सारे फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। और ये पुरुष डबल्स का सेमीफाइनल मुकाबला उड़ीसा ओपन 2022 में आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक से सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर। इसी बीच एक और अंक, और यहाँ पर काफ़ी समय बाद श्रीलंकाई जोड़ी को एक अंक मिला है।
याद रखिएगा पहला गेम उन्होंने जीता था, तो क्या यहाँ पर दूसरे गेम में हारने के बावजूद तीसरे गेम में अच्छा प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका फाइनल तक जा पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा है अभी तक। और ये आखिरी गेम में अब लगातार पॉइंट श्रीलंका को मिला है और फासला सिर्फ 1 अंक का रह गया है। Malaysians are trying their best to halt the Sri Lankans so that the ride to the finals would be easy and comfortable. Service over. 5-3. At 5-3. Wow. Service over. 4-5. This is how it happened. Six Malaysians, 4 Sri Lankans. Service over. 6-4. Line check. Players. At 6-4, the Malaysian men, they are way ahead Okay. with a thank gap of 2 points. you. Players back on court. Kinwa. He is always there to give a direction to the game from the Malaysian side. Oh, that was wonderful from Wa. 7-4. One has to look at the stance of Azeen. Azeen's stance is very Service lethal. over. The way he can 5-7. move to the corners of the court just to take on the assaults. That is a well-needed calculation, because the Sri Lankans, they always have an advantage because of their heights to put it across in the corners of the opponent courts. Up. Superb return, and he dived to return it such a way 6-7. that everybody supported that. Even though the point was lost, all the hearts have been won. जी हाँ, दिल जीतते हुए वहाँ पर मलेशियाई खिलाड़ी, और हालांकि यहाँ पर दर्शकों को अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन जितने भी जो यहाँ पर काम करते हैं, ख़ास तौर से ये बेहतरीन आयोजन में जिनका योगदान रहा है, चाहे वो राज्य सरकार के लोग हों, चाहे वो बैडमिंटन एसोसिएशन के लोग हैं, सारे जो यहाँ पर उपस्थित थे वो तालियों की गड़गड़ाहट से इसका अभिनंदन किया, क्योंकि अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए थे दोनों मलेशियाई खिलाड़ी। अंक नहीं मिला, ठीक है, लेकिन दिल जीतने में कामयाब रहे, और इसी तरह से ये मुकाबला चलता रहा है अभी तक। चारों खिलाड़ी अपना पूरा जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट मिला है। was clearly beaten. Ajin was clearly beaten. He was not able to lift it out. Service over. 8-7. ये आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है, और अब जब सेमीफाइनल और फाइनल पड़ाव के मुकाबले हो रहे हों
तब ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस प्रतियोगिता में जो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वो भारत के हैं, मेज़बान देश के हैं। उनके अलावा श्रीलंका के सचिन डायस जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी गुणतिलका के साथ, उसके अलावा 2 मलेशियाई खिलाड़ी यहाँ पर लिम किम और अजरीन इस मुकाबले में शिरकत कर रहे हैं। थोड़े देर पहले हम लोग इशिका जायसवाल को देखे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो हार गई थी। वो महिला डबल्स का मुकाबला था अपने साथी खिलाड़ी श्रीवेद्या गुरजादा जो कि भारत की हैं, उनके साथ खेल रही थी। तो इन तमाम खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी जितने भी खिलाड़ी आज के मुकाबले में, आज के दिन में यहाँ पर अपना जौहर दिखाया, सारे भारतीय हैं। तो ये जो आखिरी मुकाबला है दिन का, वहाँ 2 मलेशियाई खिलाड़ी, 2 श्रीलंकाई खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और ये रोमांच को और थोड़ा ज़्यादा बढ़ाता है। वहीं स्कोर लाइन को अगर आप देखेंगे, पहला गेम और दूसरा गेम, अभी तीसरा गेम चल रहा है और अभी भी आप दोनों जोड़ियों में ये अंतर नहीं मिल पाएगा आपको कि कौन अच्छा है। सरोज जी, Yes. Staying at 8 all, both the teams with 1 game 9-8. each in their pockets. Sri Lankans to serve at 9-8, 9-8. Oh, what happened? This is wonderful actually. Everybody is quite supportive and very appreciative about Ajin's piece of action. 10-8. Falling on the ground, that is the fighting spirit. However, the Sri Lankans are at 10. It's okay. Play. That was a forceful shot coming from the Malaysians, falling on the baseline, not allowing the Sri Lankans to come up with a good return. It was all hitting aimlessly, was not able to stay put to his footwork. That was Gunteleka. That's wonderful. 11. This 10, is how they move up interval. Change, at yes. 11 all. Look at the Malaysian. Now with the side over, and the Malaysians will be trying their best to pocket this game. Players on court. Thank you. A strange predicament among the players right now, with one game in the booty of each of the teams, 11 points. Lim. Sri Lankans are trying their best to beat the Malaysians, and Malaysians, they don't allow the Sri Lankans to get over them. That is the way the psychology works in the court number 1 among the players there.
Oh, it was a bit of aimless hitting. 12. Anyway, the advantage is always with the Malaysians this time. 12-11. काफी नेक टू नेक चल रहा है ये सेमीफाइनल मुकाबला। Service fault अभी called तक ये 2-5. तीसरा गेम चल रहा है, 12 अंक तक खेल जा चुका है, लेकिन दोनों जोड़ियों में अभी भी कोई अंतर नहीं मिल रहा है। 13-12 से आगे ज़रूर है श्रीलंकाई जोड़ी, लेकिन मलेशियाई जोड़ी ने भी काफ़ी प्रभावित किया है। जो भी यहाँ पर उपस्थित है, वो जो भी ये मुकाबले को अपने टीवी सेट पर देख रहे हैं, वो भी यही सोच रहे होंगे कि मलेशिया जिसके पास अतीत में काफ़ी शानदार। The return was very weak from the Sri Lankans. Oh. Guntilake was not very accurate in returning. He was not able to stay focused to come up with a proper follow through. That is why it went away to the advantage of the Malaysians. Touching. Now this is a moment they have to be very, very calculative instead of relying mostly on their punch play or the Service power fault. play. 14-13. Since time is running out, they have to be very, very calculative. Sri Lankans at 14 serving the Malaysians. Service fault. 14 all. All. Had the stadium been packed to the stands, everybody would have enjoyed every beat of the game here. That is being played in court number 1 now. Oh! 15-14. Muhammad. Malaysians, they look to be quite promising with a score of 15 against 14. Line jet signal. Okay. Wait. You. Decision is to come from the Before line jet umpire. signaling, okay? There has been an appeal about this point. 16-14. Change. So Malaysians, they have won the point. A very, very valuable point at this mode of the game. Gunateleke was not able to pick it up in a proper way. 17, Now 14. 17-14. काफ़ी समय बाद ये लीड जो है वो थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है अब, क्योंकि वो नहीं हो रहा था, बहुत समय से नेक टू नेक चल रहा था ये मुकाबला, लेकिन अब 3 अंकों की लीड। लेकिन देखिए वापस पॉइंट मिल गया है 15, श्रीलंकाई 17. खिलाड़ियों को। फासला फिर से घटने लगा है, 2 अंकों की बढ़त अब मलेशिया के पास। The way they were whiling away the points, it was all hitting aimlessly, maybe resulting from their overconfidence. The way they made a tremendous recovery against the Sri Lankans. They're not 16, able to 17. contain the pressure that is there on them. Now 16-17, Sri Lanka is to serve. Service over. 18-16. It's 18-16. Opportunity is there. So opportunity has come to the doors of the Malaysians, and if they open the opportunity and don't allow the Sri Lankans to move ahead, that is the way they are coming up. Is the way they're moving up to 19 now, just 2 points away from the match. Quick one. So opportunity is knocking at the doors of the Malaysians,
And the Malaysians, they're responding properly. They are not becoming deaf to the knockings of the knocking of the opportunities. Let's see. Again, conceding 1 point, the Sri Lankans. They look crestfallen. The game point, 20, match point, the match 16. point. Malaysians, they have a clear-cut advantage over the Sri Lankans, even though the Sri Lankans had a tremendous start. Great rally. 17, 20. So Sri Lankans, they have one more chance to bring a recovery. At 17-20. They have to go for 3 consecutive points if they have to hold the Malaysians. Oh, that is the end of the game. That is the end of the game. That is the end of the match. And the Malaysians, they proved their mettle. They proved their supremacy over the Sri Lankans. The Sri Lankans, they, even though they had a good start, and they impressed upon everybody, but still then, that momentum, that magic, that flick in their game, that was not there towards the end of it. So they had to concede to the Malaysians. Malaysians, even though they are, they were sort of experience and exposure, but still then they worked very hard to climb the ladder, to reach the top, and that is the way the Malaysians are. So that is the end of the match, and the final berth has